All station, Victor Tango, Golf Sierra November. How do you read? Read U5, Victor Tango, Alpha Yankee. Radio 5, Victor Tango, Sierra Mike Sierra. Radio 5, Romeo, Victor Tango, Romeo Tango Alpha. Radio 5, Victor Tango, Juliet Yankee Oscar. Radio 5, Victor Tango Oscar Mike Golf. Victor Tango, Romeo Alpha number. Radio 5, Victor Tango Mike Sierra Lima. Radio 5, Victor Tango Papa Romeo Kilo. Radio 5, Victor Tango Alpha Victor India. Radio 5, Victor Tango Sierra Sierra Mike. Radio 5, Victor Tango Golf Romeo Papa. Students, I like how you're doing readability check, but please try to have complicated calls between yourselves. If one station is asking for all stations to give a reply based upon the readability scale, whoever is replying as a reply to the question, how do you read? Of course, read U5. Make it a little more complicated. Give certain situation to that particular station who's calling out to you. And also take that station's name, take your name, and then say read U2. Make a complete call. You're being lazy right now. And that laziness could be because you're sitting since 30 minutes waiting for your chance for the mock or maybe something like that. Whatever it is, although your readability checks are pitch perfect, I'm expecting more complication. Show that to me. Couple of complications or couple of situations exchanged, clearances and requests. Quick. Victor Tango, Golf Sierra Mike, Victor Tango, Alpha Yankee Uniform 100 DME outbound Mumbai, radial 073, flight level 310, over Opaka, Golf 450, aircraft unable, RVSM due equipment estimating, Aurangabad 1430, Dubox 1445, request descent to flight level 270, Boeing 737, IFR Mumbai to Nagpur. आयुष क्या किया इस कॉल में? किसको गया था ये कॉल? एंड कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा है आयुष का. ओके. Victor Tango Alpha Yankee Uniform, Victor Tango Golf Sierra November, cleared descent to flight level 270. Cleared to
Correction. Clear descent to flight level 270, leaving flight level 310 for flight level 270. All exterior light on. Air India 1. Correction. Victor Tango Alpha Yankee uniform. Victor Tango Alpha Yankee uniform. Roger. Victor Tango Golf Sierra November. Roger. Stand Pan. by. Victor Tango. Anyway, whenever a student starts, students, whenever you start, and if somebody it is interference, the person who started the call first has to be the person who continues talking. कोई बीच में बोलता है तो आपको रुक नहीं जाना है, उसको रास्ता नहीं देना. Remember that also, a realistic experience you're getting. So make sure that you are all aware about the realistic things that are happening. Very good morning, everyone. I think we had some glitch with the link that caused a slight delay, but very nice to see everybody's there. Although a few students are missing who were requesting for the ID password. I don't know क्या हो गया, उनको कोई उठा के ले गया क्या क्लास के बाहर से. I hope that's not the case. Very good morning, a very happy Good Friday. I'm very sorry. Generally, we declare holidays on such auspicious days because it's exams and because, we have not had sessions. It didn't click. But yes, a very happy Good Friday to everyone. I hope it's a good holiday. And I hope any holiday, any festival is always a chance to restart things or start new things in life, a new outlook we get. So if you have to shift that outlook towards your examinations, then you can say that, okay, today is a fresh start for me. Today is an auspicious day, and let's just do things a little differently with a new mindset. And that mindset can always be a very lively, very positive, very confident mindset, irrespective of anything. And it all starts with a small ray of hope that I believe things are getting better or things are going to work in my favor. That being said, I sense less energy in the class, probably because you're tired waiting. So always ensure you have something to eat, you have something to drink whenever you're learning, so that your mind is always having some energy when you exhaust that energy about with respect to stress, studies, etc., etc. Okay, today's session is going to be a little different. Although we will be doing mocks, but today I'm not going to put that pressure on y'all for mock, but I will show you another way how to practice and another way how to master a certain type of calls. This is something that you have done in the past, probably many times. And this is something that might still confuse you, or this is something that will be a good thing to master when I'm teaching right now. What is that? It is something to do with deviation procedures, something to do with RCF and deviation procedures, something to do with RCF procedures. How am I saying similar things in three different ways? That is the clarity you need. So that question number 3, question number 4, and sometimes question number 2 also in your part 1 question paper will be centered around these topics. You need to master these topics because they are easy and because they carry huge weightage and they're guaranteed to come in the exam, right? How many of y'all are thorough?
with weather deviations when ATC is in contact, weather deviation during RCF, enable RVSM calls when ATC is in contact, enable RVSM calls when no contact with ATC. Transmitting blind, no emergency, no weather deviation, no RVSM, only RCF. Transmitting blind, only RCF. Odd man out, the thumb. These four are very similar. Odd man out, transmitting blind, the thumb. They all look similar. I have seen students do RCF weather deviation and RCF RVSM combined with this odd man out, transmitting blind. And that's where you will lose marks. Why are we always confused? We will find that out and we'll fix that confusion today. This session, you will see I take once before every final prep. This will cement the heavier questions or heavier calls. You be very careful, you ask your questions. If this is covered, then tomorrow we can possibly do the pending, not pending, but the SID and the STAR and a little bit of training on those things. And that will complete your understanding about things. Yesterday, I got a couple of good questions. Somebody was asking, sir, what is engine stall and surge? Engine stall and surge is a very basic thing to know if you are studying jet engine or technical general. Half of y'all might not have started, most of y'all might be waiting, or some of y'all might have never planned to do tech gen because it's not compulsory. But as a suggestion, I tell you that after your primary papers are done and everything, tech you should study. Engine stall and surge, I'll just give you a couple of pointers on this because it could come to you during your takeoff calls or landing calls, and you should not be scared. Engine stall and surge, in short, you can write it's complete engine failure. It could be that left engine, right engine. Left engine is number 1 engine, right engine is number 2 engine. If you have 4 engine aircraft, the one which is the first on the left will be number 1, number 2, number 3, number 4, like this. On a twin engine aircraft, a stall and surge during takeoff would require you to return back and make an emergency landing, just like yesterday in one of the calls that happened. Stall and surge, I'll explain as a bonus to you all today. Make sure you know that. That's the entire agenda, and we are planning to finish soon so that you can enjoy the holiday as well as get more time to study. Whatever your message you need, you don't need, I've been looking on that. I've been looking at that and been planning to work accordingly. Today also, you'll get another day to let me know whatever you need. All right. And based upon that, tomorrow and day after, we'll be doing a couple of more sessions, especially targeting 10th, 11th, 12th students, and subsequently as we go ahead. Once again, very warm welcome, Suchita. Good Friday to you too. Students, kindly acknowledge if you can hear me on a scale of 5. Today you text your call on Zoom chat. Okay, text me your call as if you write it. My call sign you will take IA. Okay, and you can just call Invictus. Invictus control. Change it. Use your call sign and tell me how do you read, but put it on chat and use IA. As in Air India, we use AI, you use IA. All stations. Invictus control, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Text me your calls, everyone. In one call only, don't send me 3 messages or with one sentence. We have Gulshan and Prerit. We have Rohita, we have Rani, we have Chavi, Om, Suchita. Very warm welcome, students. You are in the top row. Today, you are in the first bench. Prerit, Gulshan, Rani are in the first bench. Suchita, Om, Chavi, and Rohita are in the second row. Ayush, Jyotsna, Sridhar, and Gurpreet are in the third row. And Muskan, Paul, and Tanmay are in the last row. So Paul is joining in live. I'm not sure if I've seen Paul. Paul, I'd like to see you once. And yes, Ananya is missing. A lot of students are missing, but it's okay. CTR. Tanmay, CTR is control zone. It is not control. Control is ACC. Come on.
No silly mistakes, Tanmay. You are a professional. Be very careful. CTR, CTA. They are not what you need to put here when you're calling Invictus Control. Come on. How are we feeling today? Are we feeling happy? Are we feeling positive? Are we feeling driven? Or are we just being one more day in a tough life? Could be that. ओम सिर्फ एक कॉल साइन से क्या समझूंगा मैं? एक ही कॉल में मुझे सारा कॉल चाहिए। एक छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहे हैं हम लोग। इनविक्टस कंट्रोल विक्टर टैंगो से सिर्फ 5 वीडियो 5। गुरप्रीत बड़ा लेजी आदमी है, सिर्फ रेडियो 5 बोलेगा। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब आपको आरटी अब तक समझ में नहीं आया है गुरप्रीत। गुरप्रीत बोले सर मेरी क्लास बहुत ले रहे हैं आप। अभी भाई पुश कर रहे हैं आपको, भाई पुश करेंगे तो चांसेस बढ़ेंगे आपके। रानी का भी अच्छा रिप्लाई है। इनविक्टस कंट्रोल रीड यू 5 स्ट्रेंथ 5 विक्टर टैंगो रोमियो अल्फा नवंबर। वेरी नाइस। छवि रीड यू 5 विक्टर टैंगो अल्फा विक्टर इंडिया। फाइन, बट मेरा कॉल साइन मिसिंग है। बोला है मैंने, फिर तो आपको यूज करना चाहिए। छवि यू हैव एक्सेस एंड एवरीथिंग सिंस 2 PM yesterday. गेट ऑन टू इट। आज बात कर लेंगे हम लोग, डोंट वरी। और ओम का तो कुछ अलग ही चल रहा है। ओम खुद का ही कॉल साइन पहले ले रहा है, विक्टर टैंगो और उसका माई गोल्फ रेडियो 5। तो तुम कौन हो भाई? तुम खुद ही खुद से बात कर रहे हो? कोई मूवी चल रहा है क्या? तुम्हारा डुप्लीकेट आ गया है क्या? हाँ, तुम्हें खुद को ही नहीं पता, खुद ही खुद से बात कर सर रहे पहले हो। मिरर में नहीं कॉल ले सर, रहे हो पहले क्या? मैंने कॉल साइन लिया था लेकिन मैंने गलती से एंटर दबा दिया, सो सेपरेट हो गया है। तो डिसरिगार्ड यूज करो ना, और वापस से अच्छा कॉल दे देने का, फटाफट करने का अपना करेक्शन। गलत कॉल नहीं देने का, या बोल देने का सर गलती से हो गया दूसरा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट, अदर्स पीपल विल जज यू एंड वापस पढ़ के आओ जाओ। इतना ही टाइम मिलता है प्रूव करने का, किसी के पास टाइम नहीं है आजकल चेक करने के लिए। श्रीधर रेडियो 5 विक्टर टैंगो। अरे श्रीधर किसको बोल रहे हो रेडियो 5? हमारा कॉल साइन किधर है? क्या आप लोग ऑलरेडी कितने भी बड़े पायलट हो जाओ यार, फर्स्ट कॉल में कॉल साइंस लेने ही है आपको। गुलशन कॉमा यूज क्यों कर रहे हो? ग्रामर एग्जाम थोड़ी चल रही है। बाकी ठीक है, बट क्योंकि रिप्लाई है, यू कुड हैव एंडेड विथ योर कॉल साइन। गुलशन कम ऑन, तुमसे तो मैं सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। हाँ, रिप्लाई कैसे देते हैं, ट्राई करो बेटर रिप्लाई का। रोहिता वेर इज द कॉल साइन ऑफ मी? तन्मय गलत है CTR, 2 बार बोल दिया मैंने। तुम भी रिप्लाई कर रहे हो तो कॉल साइन लास्ट में बोल सकते हो। और श्रीधर अलग से पूछा हाउ डू यू रीड, एक चैट में लिख दो ना भाई साहब। Jyotsna, okay. Jyotsna, you'll just try if it's a reply, then you can just use the call sign in the end also. Invictus Control, Radio 5, Strength 5, Victor Tango, Juliet Yankee Oscar. Or Invictus Control, Radio 5, Strength 5, how do you read? Or just Radio 5, how do you read? Victor Tango, Juliet Yankee Oscar. And मुस्कान तो एयर इंडिया को सीधा कॉल कर रही है। एयर इंडिया, विक्टर टैंगो माइक सेरा लिमा, रेडियो 5, स्ट्रेंथ 5। हाई ऑन यस्टरडेज परफॉर्मेंस। मुस्कान क्या हो रहा है? एयर इंडिया कौन है? हम कौन है? IA लिखना है, ACC लिखना है। इनविक्टस इज द कॉल साइन। इनविक्टस कंट्रोल। क्या नहीं समझ आ रहा है? प्रेरित सर इनविक्टस कंट्रोल, कंट्रोल नहीं लिखा प्रेरित। स्टैंड बाय मुस्कान। विक्टर टैंगो पापा रोमियो किलो रेडियो 5 स्ट्रेंथ 5, हाउ डू यू रीड? रेडियो 5 स्ट्रेंथ 5 जनरली हाउ डू यू रीड का भी रीड बैक आ जाता है, एंड हाउ डू वी रीड देम का भी आ जाता है। तो एक ही बार बोलेंगे अगर हाउ डू यू रीड पूछ रहे हैं तो स्टूडेंट्स। तो ऐसा मगअप नहीं करना है हमें। ओके, सुचिता इज फीलिंग गुड लाइकवाइज। पॉल का कुछ अलग ही चल रहा है, एक एक मैसेज भेज रहे हो। तन्मय फीलिंग पॉजिटिव। Of course, I can relate. One more day in a tough life. So true for so many of us. Invictus Control, Victor Tango, Alpha Yankee Uniform, Radio 5. Fine, तुम भी ट्राई करो कॉल साइन बाद में लेने का, चलेगा। फर्स्ट कॉल में आप फर्स्ट 2 Ws पहले लेते हो, इट्स ऑल्सो राइट। द अदर वे इज ऑल्सो राइट स्टूडेंट। Invictus Control, Victor Tango Golf from Papa, Radio 5 with stand 5. Gurpreet,
अच्छा लग रहा है तुम्हारा एक्स्ट्रा एफर्ट, बट मत डालो प्लीज। विथ स्ट्रेंथ 5 क्या है? आपने पूछा ही नहीं, आपको रीड बैक मिला ही नहीं। रीड यू 5, हाउ डू यू रीड? ओके, एंड यू मत यूज करो, वाई ओ यू करो, लेटर यू मत यूज करो प्लीज। पर अच्छा लग रहा है, आप में कॉन्फिडेंस देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए मैं आपको छेड़ सकता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्लिक हो कि आपसे अच्छा परफॉर्मेंस करवा ले। इनवर्स कंट्रोल रेडी यू 5। मेरे को कौन रेडी करेगा भाई? दिस जस्ट मुंबई टोन समटाइम्स वी यूज। श्रीधर किसको रेडी कर रहे हो आप? किस चीज के लिए रेडी कर रहे हो मुझे? इन्विक्टस कंट्रोल रीड यू 5 विक्टर टैंगो रोमियो टैंगो अल्फा, परफेक्ट। चलो बढ़िया है। छोटे छोटे कॉल भी परफेक्ट नहीं है, देखो वेरिएशंस है। आई अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स कैसा होता है, हर पायलट अलग ही कॉल लेता है, ऑल्दो दे मेंटेन द प्रोफिशिएंसी ऑफ आरटी। फाइन। आई वी नहीं है, आई ए है स्टूडेंट्स, आई वी बना दिया आपने मेरे को, तो मेडिसिन बना दिया है। छवि क्या चल रहा है? आई ए सी, दिस लिटिल थिंग्स मैटर स्टूडेंट्स, द कोड्स ऑफ द एयरलाइन एंड एवरीथिंग, ये सब मैटर करता है। कहाँ आप इतना कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको आगे पीछे हो रहा है सब कुछ? फाइन, ओके। Any questions? Muskan, what's on your mind? Let's start with a few questions. Negative, sir. I sent message again of disregard and the reply. Hmm. So, good, good. मैं देख ही रहा, इवेंचुअली मैंने देखा ही है सबका, मैं तो बस फर्स्ट कॉल्स पे जज कर रहा हूँ सबको। फर्स्ट कॉल परफेक्ट क्यों नहीं है? Any questions? Are we ready? Do we know what we are supposed to do? Are we aware? Are we ready? It might be difficult, it might be easy. You will check for yourself. You will quickly try and come up with a call, and you will share that call with me, and you will ask doubts. It has to be quick. We don't have to stay for long. It's something you've already done, and I'm going to give you simple techniques. Be very, 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 very careful. Okay? और लाइव रखना है, क्वेश्चंस पूछ लेने हैं फटाफट फटाफट फटाफट। Anybody has any confusion with chart reading? I'm thinking probably tomorrow. I'll confirm with you all. We'll stick to the same time, 10 a.m. Okay. 10 a.m. You be ready. And please don't take it for granted thinking, sir, hamesha 10:30 आएंगे. I might sit with you at 10 o'clock itself if I think कि पहले मैं करा देता हूँ, revision time वापस दूंगा. I'm giving you self-study time, 30-40 minutes so that you can gather doubts and be ready and all that, you know. तो प्लीज जानबूझ के 10:30 इतने बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो आदत मत करो। कल को मैं 10 o'clock स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मिस कर जाओगे शुरू का आधे घंटे का लेक्चर। So it's not always going to be mock, and don't just assume things, okay? Just be present and do as you're asked to do, students. Remember that, okay? नहीं तो होता है ना, हमें लगता है रे सर तो लेट आते हैं, हम भी लेट आए, ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के आपको सब दिया जा रहा है। ऑफलाइन होता है तो भी ऐसे ही होता है कि आप आके बैठते, सर आके आते जाते रहते हैं, आपको दिखते रहते हैं, सर है, सर ने कुछ काम दिया, हम वो कर रहे हैं, सर कभी भी आगे क्लास ले सकते, so you are always alert, always ready. वो माइंडसेट है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स हु हैड रेज्ड हैंड्स, आपने रख क्यों दिया? आपके डिजिटल हाथ दुख रहे हैं क्या? कुछ क्वेश्चन पूछा था, 5-6 लोगों ने हाथ रेज किया था, बट अब सब गायब हो गए हैं। प्लीज लेट इट स्टे देयर ना। द क्वेश्चन वाज
How many students are thorough with that? Those 5 things. Remember this hand. Weather deviation with ATC, weather deviation RCF. RVSM enable RVSM with ATC, RVSM with RCF, odd man out, transmitting blind. इनमें similarities है, इसमें नहीं है. इसमें RCF नहीं है, इनमें 2 में RCF है, 2 में RCF नहीं है. Simple strategy. मार्क कर लो, ऐसे एक छोटा सा हाथ बना लो, उस पे पॉइंटर्स दे दो आप चाहिए तो. वही टेबल करनी है हमें, उसके कॉल्स देखने हैं अच्छे से, है ना? So Sridhar, Ayush, Suchita, Muskan, Rani, Jyotsna, Om, Gulshan are saying that, sir, we are aware of this. Tanmay bol raha hai, sir, I am aware of this. Prerit, Chavi, Rohita, Gurpreet and Paul. Prerit को भी ध्यान में आ रहा है, प्रेरित बोल रहा है. So Chavi, probably you have to study couple of more sessions to get through it. आपको तो करना ही. I think for you 3 5 are 15, 3 6 what? I think for you 3 4 days worth आपको पढ़ना है डेली लेक्चर. दो कर लो, हो जाएगा 3 दिन में आपका. सब दे दिया मैंने आपको. एंड टुडे वी गोना टॉक. सो प्लीज कंटिन्यू करना. ये सेशन के बाद ब्रेक लेगा, आप कर लो, आपके पास कोई और काम नहीं है तो. ओके, नो प्रॉब्लम. गुरप्रीत, आपको आना चाहिए था ये, बट ठीक है, अभी ध्यान रखना. एंड पॉल, इट्स गोना हेल्प यू. सी, कीप एन ओपन माइंड. एंड आई एम नॉट श्योर पॉल प्रोग्रेस क्या है आपका, बट लेट्स सी. टेक फ्लो एंड गिव मी अ फीडबैक. लाइक गो विद द फ्लो एंड गिव मी अ फीडबैक आफ्टर द सेशन ओवर टेक्स्ट. ठीक है, हाथ ऐसे रहने देना स्टूडेंट्स, प्लीज. आई नीड दिस. No more questions? Anyone? चलो मैं पूछता हूँ एक क्वेश्चन. माई क्वेश्चन इज टू गुलशन. ओके. Victor Tango Golf Sierra November. The question is, tell me about the standard deviation procedures when you have a bad weather warning en route during flight, in flight. I need to know the standard deviation procedure you need to follow in flight when you get a bad weather warning ahead. So for bad weather warning ahead, we turn right or left for 900 degrees, and at 10 nautical miles, we climb for 300 feet or descend for 300 feet, and fly offset for a duration, and will join the route when clear of weather. Gulshan, दोबारा से आंसर दो and use the things that I have trained you and avoid the things that you have picked up from other places. दोबारा से कॉल दो, आंसर दो मुझे इस चीज का. Sir, when we receive weather warning ahead, turn right for 15 nautical miles. At 10 nautical miles, either climb or descend to 300 feet, and fly parallel to the deviated track to avoid weather. For how long? So for 15 minutes, mostly the duration is Duration 10 duration 15 minutes or 15 minutes. कौन बोलेगा? और until clear of weather. weather. Common sense किधर है? Common sense किधर है? Where is the common sense? Think about it. तो आपको क्या सही लगता है? आपने जो भी मेमोराइज करे हैं वो बेटर लग रहा है यूज करने, या जो सिखाया है वो बेटर है यूज करने के लिए? Sir, I think combination भी आप यूज कर सकते हो, because I've told you, like, if you pick up intent from other solutions, I don't mind, because there are many solutions, many papers, you can always pick up intent. But the rule is to do things what I've taught as 100% thing, and whatever extra you do over and above that. So when I see आप यहाँ से वहां से यहाँ कर रहे हो, I don't really mind, but I always believe then something could go wrong, if you're not focused. But 90-degree right is not something we will use on the RT call. I have not taught you that. वहां आप गड़बड़ कर सकते हो. वो वर्ड वहां पे आपको पॉइंट्स डिड्यूस कर सकता है अगर एग्जामिनर बहुत स्टर्न है तो वहां पे. So that one thing can really mess up your call. And then the word offset, fine.
यहाँ वहाँ यूज कर सकते हैं, अभी, mob set, and maybe couple of more with respect to directional references. But flying parallel on deviated track until clear of weather or duration 15 minutes, उसमें भी कुछ गलत नहीं है. वो आपको एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी देता है व्हेनेवर यू आर रीराउटिंग एंड डूइंग अ लॉट ऑफ डेविएशन कॉल्स, जो कभी कभी एग्जाम में आते हैं कि आपने डेविएट किया था, अभी भी वेदर क्लियर नहीं हुआ, अभी भी आप डेविएट कर रहे हो. देयर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर यू विल सी यू विल हैव टू फ्लाई पैरेलल टू द ट्रैक अप टू डेस्टिनेशन एंड देन गो टू डेस्टिनेशन, बिकॉज बैड वेदर पूरा रूट में था हमारा. So that's where flying parallel really helps you. Offset will not help you there. The word itself. We bring the thoughts to the basics, but we get confused of if our tongue is slipping with respect to flying parallel on deviated track, then we practice it. Why is it so difficult? Okay, these are our USPs that if we don't use, then how will we get those added marks? If you want to do something that everybody else is doing, then फिर professional training का क्या फायदा? कुछ अच्छा सिखाया आपको, आपको लग रहा है वो कम है, आपको लग रहा है जो आपने जो क्वेश्चन पेपर में पढ़ रहे हैं वो ज्यादा है, जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो कम है. पता नहीं ऐसे क्यों लगता है. मे बी बिकॉज एवरीबडी थिंक्स व्हाट वी हैव इज लेस कंपेयर टू व्हाट अदर्स हैव, या फिर हमको हमेशा लगता है हमारा ग्लास आधा खाली है. तो कम ऑन स्टूडेंट्स, आई एम नॉट स्टूपिड टू टीच यू लेस. इतना तो सोचो खुद से, इतने कॉन्फिडेंस में, वो भैया इतने कॉन्फिडेंस में, लाइक तो स्मार्ट रहो. बट या ठीक है, ओवरऑल गुड, overall good, not perfect but good. Jyotsna, are you able to give me an answer verbally, yes or no? If no, then you can just type in your answer. Your answer I need is what to do when you are non-RVSM approved but you are assigned RVSM flight levels. The question is for everyone. Be prepared with your answers. I can ask the same answer to anyone because I think Jyotsna is going to text. So private रहने वाला. The question is, what will you do when your aircraft is non-RVSM approved, but you are assigned an RVSM flight level? Now, Gulshan, you don't feel bad. अरे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बस take the feedback and be open to it. बोले सर ठीक है, समझ रहा हूँ, I'll do that. बस. और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, आपको समझना है. बाकी जो कर रहे हो बढ़िया ही कर रहे हो आप, समझ रहे हो आप. आई डोंट वॉन्ट, अगर आप 100% परफेक्ट आ रहे हो तो मैं 1% भी मिस्टेक नहीं छोड़ने दूंगा, तो जो लगेगी वो बताऊंगा मैं आपको. ऐसा आप उसको टैली करोगे फिर. ठीक है सर, एक दो मैं रिस्क लेता हूँ, बाकी तो मैं मेजर मेरा अच्छा है. सो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर एंड आई डू इट, डोंट यू वरी. ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए. फिर आप टेंशन मत लो, मिक्स करके बोलूंगा बट अपना वाला ही ज्यादा बोलूंगा मैं, ऐसा कुछ. सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. आई एम नॉट अपसेट, आई एम नॉट एंग्री. अब समझा रहा हूँ आपको कहाँ का एक गलती हो सकती है हमारी. ओके, वो 90 डिग्री राइट, ऑल्दो वो राइट एट 90 डिग्री ही होगा ऑफ कोर्स, बट वो बोलना नहीं है वहां पे, हमें नहीं बोलना है. ठीक है, वो वियर्ड लग रहा है, बहुत वियर्ड लग रहा है वहां पे. इट गोज अगेंस्ट योर ट्रेनिंग बेसिकली. Any more questions? Yeah, who's transmitting? Jyotsna, your answer, we can fly in the RVSM flight level saying aircraft enable RVSM. Rethink. Is this the question? Is this the situation to this question, students? Just I rethink. Who can give me the answer to this question? Your aircraft is non-RVSM approved and you are assigned RVSM flight levels. Come on. Sir, will request the flight level and will mention like negative RVSM. Aircraft negative RVSM. Gulshan is right. Aircraft enable RVSM we will use when we are RVSM approved, but then some or the other system goes wrong. All right. Then we say we were RVSM approved, but due to one or the other issues of the system, we have become enable RVSM. When we are non-RVSM approved, we say aircraft doesn't have RVSM approval. We say that with two words, aircraft negative RVSM or negative RVSM. We use that word negative RVSM at the end of the call. बहुत स्लाइट डिफरेंस है. अभी तक हमें ये नहीं आ रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं 10-15 मार्क्स हमारे जा सकते हैं. मेक अ नोट ऑफ दिस एवरीवन.
Study this point and discuss if you have got it or not. Students who have not got it will discuss verbally. Wilson, good thinking, negative RVS. इतनी सी चीज है बस जो आपका कॉल सही या गलत कर सकती है. Slight difference. Jyotsna, tell me if you have understood. Correct your answer. ओम का आंसर बड़ा सिंपल है टेक्स्ट पे. Proactive. Students, proactively, I don't mind you giving me chat box answers. Jyotsna, correct the answer. ओम का आंसर मुझे अच्छा भी लगा, अच्छा नहीं भी लगा. अच्छा लगा बिकॉज पार्ट 2 के स्किल्स दिख रही है मुझे. मैं बता दूं ओम ने क्या लिखा है. वी कैन कंटिन्यू एज पर फ्लाइट प्लान बाय टेकिंग क्लियरेंस फ्रॉम अप्रोप्रिएट एटीसी. सही बोले हो आप, बट कौन सा क्लियरेंस? क्लियरेंस में क्या बोलोगे? आप बोलोगे मुझे वही फ्लाइट लेवल चाहिए जो दिया है, बट एयरक्राफ्ट नेगेटिव आरवीएस है. वो एक ही पॉइंट है जो आपको ऐड करना है वो क्लियरेंस पे. बाकी आपने सही लिखा है, सही एटीसी से सही क्लियरेंस एज पर फ्लाइट प्लान ओनली. इट मीन्स एज पर दैट आरवीएस एंड फ्लाइट लेवल ओनली. बट ये आप अपने क्वेश्चन के आंसर में डिस्क्राइब करो, नहीं तो सामने वाले को लगेगा आपको नहीं आता है. मैं समझ गया आपको आता है, बट आपने पूरा नहीं लिखा है. तो आपको एयरक्राफ्ट नेगेटिव बोलना है, सेम क्लियरेंस लेना है, सेम फ्लाइट लेवल मांगना है. बस एयरक्राफ्ट कॉल के एंड में एयरक्राफ्ट नेगेटिव आरवीएसएम बोलना है, नेगेटिव आरवीएसएम. तो आपको मिल जाते हैं आरवीएसएम फ्लाइट लेवल्स, अगर मिलेगा तो एटीसी दे रहा है तो. जिससे जिससे बात कर रहा हूं प्लीज एक्नॉलेज करो. हम्म. ओम समझ आ रहा है? अबे ओम किधर हो हीरो? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. Affirm Victor Tango Oscar Mike Goal. क्या सबको स्पेशल इनविटेशन चाहिए हाँ? दिया था सर मैंने रिप्लाई. कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? वर्बली. किसको? आपको. गुलशन सुना क्या तुमने? नेगेटिव विक्टर टैंगो गोल्फ सियरा नवंबर. तो कैसे दिया मेरे को ओम? दिया था सर. अरे चलो केस कोर्ट में चलो, प्रूव करते हैं. चलो चलो आ जाओ आ जाओ. एनीबॉडी लॉयर इन द क्लास? एक है अपना स्टूडेंट हु इज अ लॉयर विद एन एयरलाइन ओनली. वही मेरे को एक दिन बोला था सर आपको सू कर दूंगा मैं. मेरे को क्या ही सू सर करोगे आप, मेरे को क्या ही सू करोगे? चैट मैं डर बॉक्स. गया, पता है मैं बहुत डर गया. मैं बोला यार मेरे को मत सू करो यार, मेरे को सू करोगे तो फिर क्लास कौन चलाएगा. या फिर ही डिडंट सू मी. डरा रहा था वो, मैं डर भी गया. क्या ओम क्या बोल रहे हो? चैट बॉक्स? सर चैट बॉक्स ओपन था लेकिन वो पीटीटी के बजाय वो स्पेस दब गया शायद. हाँ तो अवेयरनेस नहीं है ना भाई साहब. ब्लाइंड कॉन्फिडेंस है बट अवेयरनेस नहीं है. कल को प्लेन क्रैश कर दोगे फिर तो तुम. हम्म. नहीं सर. नहीं इतना ब्लाइंड कॉन्फिडेंस है, किया 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 सबके सामने, फिर पता चला मैंने नहीं किया. कोई इंसान पहले बोल रहा है तो चेक कर लो ना. बाद में जवाब दो, अरे नहीं हुआ मैं कर लेता हूँ. कोई बात नहीं, चलो ये सब बाद में तुम लोगों को लाइफ खुद सिखा देगी ये सब. नो मोर क्वेश्चंस. गुड आंसर्स, नॉट परफेक्ट आंसर्स बट फाइन. अच्छा है, बहुत अच्छा है. अप टू अ कैलिबर ऑफ 80-90% है, सो आई डोंट माइंड. A very simple thing that we need to do right now, and it's a very simple flow chart. I'll explain you. अच्छे से समझ लो. क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं है तो बता देना. एक दो लोग से आंसर्स पूछूंगा, अच्छे से बोलना है मुझे. किसी ने आगे का ज्यादा नहीं किया है फिर भी आपको समझ आएगा. एंड देन विल बी डन. ओके, so let's understand the situation. What is RCF? Let's understand the situation. What is RCF? What is transmitting blind? What is deviation? And deviation on your own. There are many keywords. Okay. There are many keywords to understand. Keywords are nothing but short lengths of words that tell you a bigger meaning. अगर मैं पूछता हूँ ओके
Ayush, are you okay to fly today? Cessna 172 and carry, this and that and do that. And I am not sure if I can do it, but I know it's your off, but would you like to do that work? Ayush might just use 2 keywords or 3 keywords. इतना लंबा मैंने उसको काम दिया है. Ayush can just use keywords to tell me a few things. What? Affirm, negative, unable. Unable मतलब करना चाहता हूँ, कर नहीं सकता हूँ. Affirm मतलब कर दूंगा. Negative मतलब नहीं करूंगा. Quick answer. These are keywords जो हमारे phrases में भी आता है. Keywords नहीं होते, keywords का invention ही नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं? आयुष क्या बोलता है? नहीं यार, मेरे से नहीं होगा, नहीं मैं करता हूँ, नहीं मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहां जाना है. थोड़ा लंबा हो जाता है सेंटेंस. सिंपल. अदरवाइज ठीक है. ओके. नो. Similarly, everything is overruled by keywords. This is another secret to success and clearing exams. भाई बहुत strategies है पता है. Exams are the easiest things if you know how to study. So I will talk about RCF. RCF is lost contact CTC with air traffic controller. That is RCF. What are the reasons? मेरा RCF क्यों होता है? One of the main reasons is that my transmitter fails. TX transmitter. My transmitter fails means what I just said was this is what happens when the transmitter fails. You transmit, but your messages don't go out. When transmitter fails, it means receiver might be working. इसका मतलब क्या है? Receiver might be working and transmitter fail. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है my aircraft is flying, my ATC is on ground, my transmission TX and my reception RX, they work like this. So in this case, my transmission fails, but I can receive. ATC के messages मुझे आ रहे हैं, but मेरी आवाज नहीं जा रही है. तो मैं क्या मांग रहा हूं उनसे? As a pilot, what are the clearances that I need? I cannot request. It's a bad situation in case I have emergencies. But the good thing is, ATC can scan me on the radar, transponders. Plus, you will use, whenever you have RCF, you will use a SCOC code. Who can tell me what is the SCOC code for RCF? Transponder code for RCF? Sir, SCOC 7600. Can anyone confirm? 7600. Communication failure. ये आप तुरंत अपने ट्रांसपॉन्डर के कीपैड पे डाल दोगे. द ट्रांसपॉन्डर कीपैड इज जस्ट लाइक योर न्यूमेरिक कीपैड ऑन योर कंप्यूटर्स लाइक दैट. तो आप ये तो कर ही दोगे तो उनको पता चलेगा RCF है. Then there are many ways you can signal to the ATC that you're receiving messages. One of the ways is through flashing your landing lights. There are many ways ATC can also communicate to you when you cannot receive ATC signals. That is also through flashing lights. There are special lights on the aerodrome, something that you learn in regulations, if you remember. So there are many ways you can communicate if you have radio communication failure. RCF is radio communication failure. Okay, radio communication failure. It's all about radio. The good thing is in modern aircraft, we also have CPLDC, something, an abbreviation that Muskan had yesterday. Controller Pilot Data Link Communications. It's like a chat-based feature available on the MCDU or other user interfaces in your cockpits. You have specific codes. There is
a sort of language that we use in RT that you can also learn for CPLDC systems, sort of codes. Pan, Mayday, they all have 2-letter codes in that language. You are very lucky that your RT does not involve that licensing. Otherwise, आपको double पढ़ाई करनी पड़ती है. But the manual with which I've taught you part 1 ke basics in the master class, the same manual you will also see CPLDC codes. And it is the same. Reports and everything are the same. Just it's text based. So the codes are different. The words are different. The phrases are different. And you don't do it verbally. तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप when you're simulating the RT in the exam, you don't think that मेरा एक RCF हो गया तो मेरे को communication का कोई मोड ही नहीं है. Firstly, SCOC हो गया. Secondly, visual lights indications. Third, CPLDC तो definitely है आपके पास. चौथा, आप HF ट्राई कर सकते हो कभी भी, क्योंकि HF सिस्टम इज डिफरेंट. इट हैज इट्स ओन एंटीनास, ओन कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग. ये बेसिक आपका VHF assumption है कि आपका VHF फेल हुआ है. तो व्हेन आई विल टेल यू अबाउट ट्रांसमिशन ब्लाइंड वाला RCF, वहां पे यू विल ट्राई टू कम्युनिकेट वाया ऑल दीज मेथड्स, और एटलीस्ट दी ऑल अवेलेबल रेडियो मेथड्स, like trying to call to different VHF stations, ground approach, tower control, or next control, or previous control, जो भी immediate vicinity में होगा आपके. And then if you have HF, mostly for a jetliner, you will have HF. You will try to contact with HF, that is radio, and try to contact with everyone and see if frequency problem है या actually मेरा कोई system खराब हुआ है. And जब किसी से बात नहीं हो रही है, तब you assume that you have total RCF. So total RCF and RCF are also two different things. Exams में आपको simply लिखा जाता है either RCF, either total RCF. या लिखा जाता है your ATC is not responding or no ATC is responding. या बोला जाएगा ground controller is not responding or no ground controller is not responding. Thin line. आपको समझना है एक एटीसी नहीं कर रहा है या सारे नहीं कर रहे हैं. अगर एक नहीं कर रहा है, then you have to simulate that you are trying to connect with other ATCs just by raising the station. If you don't get replies by the examiner, then you assume that you have total RCF, and then you go ahead with total RCF procedures. Total RCF procedures can be deviations on your own or transmitting blind call. So see, odd man out transmitting blind calls. Total RCF में ही deviation on your own or you're transmitting blind. So how do we figure out the deviate करना है या transmitting blind करना है? We figure out with simple whether deviation है और total RCF है तो deviate on your own. First वाला नहीं था, second वाला था. Whether deviation है but total RCF नहीं है, no deviation on your own. Whether deviation है but total RCF भी है, deviation on your own. Enable RVSM हो गया हो but total RCF नहीं है, no need to deviate. Just request for non-RVSM flight level जिससे भी बात हो रही है. But enable RVSM है and total RCF है, deviate on your own. यहाँ से ये जो दो calls है, ये वाले जो दो calls है मेरे, RVSM total RCF and weather deviation total RCF, ये दोनों calls पे क्योंकि मैं deviate कर रहा हूँ खुद से, कोई clearance मुझे मिला नहीं है. Although I'm following the standard deviation procedures that everybody is taught, still I don't know if it is safe or not. So it becomes a situation or a condition that affects the safety of my aircraft, my passengers, any other aircraft, any other person inside, but does not require immediate assistance. It means safe रहो, सुरक्षित रहोगे. ऐसा सबको अलर्ट कर दो. अलर्ट कैसे करेंगे? By using the urgency code pan 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 pan. Logic समझो आप. I have seen students forget pan pan. Why? The concept is this: you're deviating from your flight path to avoid a serious mishap. It could be bad weather, it could be RVSM proximities without ATC permission. But although it is, even though it's not permitted by ATC, it is a standard deviation procedure that has given you the permission through your overall qualifications to be a pilot. आप वो कर सकते हो, बट आपका रूल है कि आप खुद से कर रहे हो, सबको अलर्ट कर दो. All exterior lights on, keep a lookout. तो बोल ही रहे हैं कि यार I'm just flashing out loud, you know, I'll just observe and be careful and stay away from me, please. अब इस चीज में सिर्फ सब लोग विजुअल लुकआउट थोड़ी रखेंगे. स्टूडेंट्स, पायलट्स यहाँ थोड़ी देखते रहेंगे. दूसरी एयरक्राफ्ट जो विसिनिटी में होगी, जिसने ये कॉल सुन लिया,
ये कौन से फ्रीक्वेंसी पे जाएगा कॉल, ये हम ध्यान ही नहीं देते हैं फिर। सर चलो कॉल तो मैंने कर लिया, ऑल एयरक्राफ्ट कर लिया। अब ये ऑल एयरक्राफ्ट को क्यों कर रहे हैं? बिकॉज थ्रेट इन एयरक्राफ्ट को है जो आपके आसपास उड़ रहे हैं आपके साथ। बिकॉज एटीसी का परमिशन नहीं मिला, आप खुद से डेविएट कर रहे हो। दिस लॉजिक इज व्हाट हेल्प्स यू मेक अ परफेक्ट कॉल। रट लोगे तो कुछ ना कुछ तो मिस कर ही जाओगे आप। लॉजिक याद रहेगा ना तो आपका कॉल कभी रॉन्ग नहीं होगा। आगे पीछे हो सकती है कुछ चीजें। सो यहाँ पे सॉरी सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? एज अ पायलट आई रिमेम्बर सारी एयरक्राफ्ट को कॉल करना है, बट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जिस कंट्रोल में हूं या जिस अप्रोच में हूं जहां मुझे नॉर्मली कॉल करना था, उसी फ्रीक्वेंसी पे मैं ऑल एयरक्राफ्ट को कॉल कर रहा हूं। क्यों? मुंबई कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी में मैं ऑल एयरक्राफ्ट को क्यों कॉल कर रहा हूं? क्योंकि उस एयर स्पेस में, बिकॉज ऑन दैट एयर स्पेस एट दैट फ्लाइट लेवल all aircrafts are tuned to that control only. So if you want to communicate to all aircrafts, you also use the same frequency, which will be that control. Here you don't need interpilot frequencies. So you will use Mumbai control frequencies so that everybody tuned to Mumbai control in that airspace, everyone who is under threat because you are deviating on your own, will be addressed on that same frequency. So this particular situation has a lot of elements, just like everything else. Even if you get ready to go somewhere and when you choose what to wear, there's so many different things. It's not just one dress always, right? You have to take care of your hair, your face, accessories, comfort, shoes, so many things. Everything is important. Exactly how this is when you talk about an article or a conversation. A conversation done perfectly can save lives. A miscommunication can cost lives. अब बोलो इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है? हम क्यों कर रहे हैं ये चीज? क्यों सीखना चाह रहे हैं ये चीज? अंदर से क्यों आनी चाहिए ये चीज? बिकॉज मे बी 20 years down the line you might find it useful. I think so. That's the logic. ये सेम चीज आपको टेक्निकल वे में समझनी है, विच वी गिव यू एज पॉइंटर्स, जो आपको कभी याद नहीं रहते अच्छे से। जिसको याद रहते हैं उनके हाथ में आरटी आ जाता है, राइट? तो ऑल यू हैव टू डू इज मेक श्योर जितना सिखा रहे हो उतना अच्छे से याद हो आपको। अनदर वे टू नो इफ यू हैव आरसीएफ, रीजन नंबर 1 लिख देते हैं। इट्स नॉट प्रायोरिटी वाइज नंबरिंग, ओके? रीजन नंबर 2, receiver failure. Receiver failure means your transmitter might be working, students. इसका क्या मतलब हो गया? Your calls are going, so you can keep transmitting every time, so that ATC knows what you are doing, where you are, but you will not receive anything, so you don't have clearances. This is exact where you have. This is a situation where you have to continue proceeding as per your flight plan, but you cannot do this when you have to deviate. When you have to deviate, it becomes a pan all aircraft call, and then you deviate. So RX receiver failure में भी आप deviation कर सकते हो, बट रिसीवर फेलियर में आप ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड भी कर सकते हो। सो वहां पे 2 वेरिएशंस आ जाएंगे। ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड तब करोगे जब ना वेदर डेविएशन है ना आरवीएसएम सिचुएशन है। ऑल एयरक्राफ्ट तब करोगे जब वेदर डेविएशन है बट एटीसी नहीं है, या फिर आरवीएसएम है बट एटीसी नहीं है। आरवीएसएम जब भी बोल रहा हूँ, इट मीन्स अनेबल आरवीएसएम, नॉट नेगेटिव आरवीएसएम। I'm hoping you are making your own short notes to remember these more over and above what I'm doing right now. Students, kindly acknowledge if you're following what's happening in the class. जिसने हाथ रख रखे हैं वो दूसरे इमोजीज यूज कर सकते हैं। पीपल आर यूजिंग दिस। सो प्रेरित एंड मुस्कान समझ रहे हैं अभी तक, ओम समझ रहे हैं, छवि, तन्मय, सुचिता, गुलशन, आयुष, रानी, गुरप्रीत। पॉल इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई गेस रेस्ट एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। पॉल हिंदी नहीं समझ रही क्या आपको? पॉल बोला सर मैं तो ऐसे चालू रखा है सेशन। टीएक्स, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन। रिसीवर फेलियर मींस ये नहीं हो रहा है आपका, बट आपका एक तरह तो मैसेज जा रहा है ना। This is exactly if there are no deviations you do in transmission blind calls. Receiver failure, okay?
Receiver failure can also mean, okay. In other words, receiver failure can also be called as no ATC is responding. समझो, read between the lines. ATC respond नहीं कर रहा है मतलब शायद मेरा रिसीवर खराब हो गया, रिसीव ही नहीं कर रहा है कुछ. The receiver failure could be to do something with speakers also, we don't know. अभी इंजीनियर्स को बुलाएंगे, वो चेक करेंगे, टाइम लगेगा. लैंड तो करो प्लेन को पहले. ऐसे इन ऑन बोर्ड इंजीनियर नहीं होता, अरे प्लेन को साइड में लगा, पहले चेक कर ले फिर चलते आगे. ऐसा नहीं होता, राइट? एवरीबडी नोज दैट. पहले इन फ्लाइट इंजीनियर्स होते थे, but they used to be more about maintaining the systems because systems were very complicated. Now we have reduced the workload or increased the workload, however you want to see it. And many people in the United States are pestering the Federal Aviation Administration since past 10 to 20 years to make the aircrafts, instead of aircrafts flown by 2 pilots, to aircraft flown by just 1 pilot. But the good thing is that old people who created aviation technologies still exist, that they are not allowing them to do it. And there is a good reason why, and that reason is complacency or fail-safe or backup, in simple words. Okay. There's something extra for you. No ATC is responding. Your ATC not responding. No ground controller responding. Okay. Here, don't directly assume it's a receiver failure when your ATC comes. Your ATC means try calling next ATCs one by one by raising the station. If no one replies, assume total RCF via receiver failure. Then follow total RCF procedures. अब ये total RCF procedures क्या है मेरे? One, requiring deviation on own. That is flying as per flight plan is unsafe. There is a reason. And second RCF, second total RCF procedure is not requiring any deviation. That is safe to fly as per flight plan. So जो require deviation on your own total RCF पे आता है students, that call goes to all aircraft in the vicinity of place name or route. Okay. Invictus control, correction, I'll use an aircraft call sign. Let's use normal call sign. Let's not put any aircraft into danger. Victor Tango Alpha Lima Kilo, correction, Victor Tango Alpha Lima Kilo on 118.1. This is actual ATC frequency of your control or any airspace where you are. जो भी airspace में हो आप. Mostly, I'm just saying, mostly ये सब आपके control वाले ही calls होंगे. Most of the times, cruising altitude calls होंगे. कोई ना कोई control में आप रहोगे. But keep an open mind. कुछ और भी हो सकता है. Lower flight levels भी हो सकते हैं. VFR भी हो सकता है जहाँ शायद आप control से बात ना करो. But VFR lower levels पे आप control से बात कर सकते हो because control generally 100 से चालू हो जाता है. Approach बोलेगा चले जाओ control पे, approach में हो तो control से बात करनी ही पड़ेगी हमें वैसे भी.
समझ के ले लो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगी हमसे। सर फ्रीक्वेंसी क्या यूज करनी है, आप समझ गए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। आफ्टर हैविंग ट्राइड ऑल द पीपल, और आइदर हैविंग बीन डायरेक्टली टोल्ड दैट टोटल आरसीएफ, जो भी है कंक्लूजन तो यही आनी है हमारी। क्या आप सब लोग समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? टेक अ मोमेंट टू सोक इट इन, सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा फिर। Sir, can you scroll up? ऊपर वाला हमेशा एरो ट्रांसमिशन रखेंगे, नीचे वाला रिसेप्शन रखेंगे। ऊपर वाला क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहा है कॉल, और रिसेप्शन हम नीचे रखेंगे इन एग्जांपल्स बिकॉज वो नीचे से ऊपर आ रहा है कॉल, लाइक सिंपल। सो चेंज मत करना आप, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ये सब लग रहा है सिंपल है, बट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत बहुत अच्छी चीज है ये। ध्यान से पढ़ो इसको, स्टडी करो, अभी बाद में के लिए कुछ मत रखो। यहाँ के टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। और पूछो अच्छे से, स्टडी दिस, इतना तक स्टडी करो। स्टडी दिस राइट, आई एम गिविंग यू कपल मिनट्स। Sir, little down. A little more. Near that, yeah, tables. Okay, sir. गुलशन, मगंग अप स्ट्रेटजी को धीरे धीरे टेक ऑफ करो, ओके? Sir, ओवरऑल won't here will be a pan call? ओवरऑल मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें, ओवरऑल मगअप की स्ट्रैटेजीज को ओवरऑल धीरे धीरे कम करना है। ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ। आएगा पैन पैन भी आएगा, गुड थिंकिंग, वेरी गुड। आएगा पैन पैन भी आएगा। पहले किसको कर रहे हैं? एंड बिकॉज इट्स अ डेविएशन ऑन योर ओन स्टूडेंट्स विदाउट एटीसी, इट्स अ थ्रेट एज वी स्पोक, so the call will start with pan pan. So remember, हम इतना याद करते हैं बट कभी कभी हम पैन पैन भूल जाते हैं, होता है वो। आई वाज जस्ट गोना टेल यू दैट। गुलशन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ो अच्छे से, उतना याद रखो। पैन पैन तो लिखना है ऑफ कोर्स, बट जो बोल रहे हो उस पर ध्यान रखो, नहीं तो आपको लगा मेरे को कुछ अच्छा है जो सर ने मिस किया, ये जीनियस एंड फिर वहाँ पे ये सब भूल जाएंगे हम पढ़ना। So आपको बेसिक डिफरेंसेस, दिस इज हाउ यू स्टार्ट, नो डाउट स्टूडेंट्स। पैन पैन आएगा, वी गोना ऐड पैन पैन, होल्ड ऑन टू दैट। फिर वो कॉल कैसा होगा? हु इज द W1 इन दिस कॉल? ऑल एयरक्राफ्ट इन द विसिनिटी ऑफ सो एंड सो प्लेस, ये पूरा W1 है आपका। हुम आर यू कॉलिंग? समझ रहे हो? इतने में भी आई नो, इन दिस मच ऑल्सो आई नो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। आई डोंट वांट यू ऑल टू बी कंफ्यूज्ड एनीमोर, आई वांट यू ऑल टू बी मास्टर्स। व्हाट इज W2? माय कॉल साइन, ओके? फ्रीक्वेंसी यू मेंशन, यू डोंट मेंशन, इट्स फाइन, इट्स अंडरस्टूड। या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कौन है फ्रीक्वेंसी। एंड देन यू स्टार्ट विथ योर कॉल बॉडी, position, estimates. When I say position, it includes radial DME flight level. Okay. Estimates, of course, ETA, type of flight, whatever extra information you can give. In the end, any other info. And then you will say all exterior lights switched on. Keep a lookout. Because it's a threat to other aircraft, like we just discussed, the call has to have that code. Otherwise, even after calling the right aircrafts and everything, if we don't raise that alarm, then we are not doing our job well. That is of communicating via RT. It's not just communication, it's also ensuring safety for the aircraft and the passengers. So the code that we use, which will start, which we already know, pan pan, pan pan, pan pan. All aircraft in the vicinity of so and so. Victor Tango Alpha Lima Kilo.
lost contact with ATC, bad weather ahead, deviating on own to avoid weather, turning right 15 nautical miles. At 10 nautical miles, will climb 300 feet, fly parallel on deviated track to clear weather. All exterior lights on, keep a lookout. The same if I have to do with respect to RVSM. Pan, 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 pan. All aircraft in the vicinity of so and so. Victor Tango Alpha Lima Kilo. Lost contact with ATC. Aircraft unable RVSM due equipment. Boeing 737. Heavy. Turning right 15 nautical miles. At 10 nautical miles, will climb 500 feet. Maintain parallel on deviated track. All exterior lights switched on. Keep a lookout. "20 on 20 in less than 15 seconds, maybe 30 seconds. अगर ये मास्टर नहीं किया तो क्या मास्टर किया एग्जाम के पहले? Look at the comfort with which I have gained clarity on these concepts. You also develop that. You don't need to rush to do something so complicated. You see, the calmness, the proficiency, the confidence. एक गलती नहीं हुई वहां पे. होगी ना तो भी समझ में नहीं आएगी किसी को, इतने अच्छे से कॉल ले रहे हैं. क्यों हमने रेडियल नहीं बोला, डीएमई नहीं बोला, फ्लाइट लेवल नहीं बोला, एस्टिमेट्स नहीं बोला? करेक्ट. रेडियल डीएमई आपको डालने हैं, याद रखना. मैं तो आपको बेस कॉल बता रहा हूँ, एंड दैट्स हाउ यू पॉलिश योर कॉल्स फर्दर. फिर भी द वे आई हैव टेकन द कॉल, आई एम श्योर द एग्जामिनर विल लाइक, सर आप तो 10 आरटी लेके चले जाओ यहाँ से. So that's the advantage you have when you do things professionally. You stick to the basics. Right? Any doubts? अब समझ गए? Weather, deviation, total RCF, RVSM, total RCF. अभी सर मेरे को कॉल लिखा दो. अरे क्विकली प्लेबैक 1 minute, 1 hour, 20 minutes down the session. टाइम रिकॉर्ड कर लो स्क्रीन पे. बस यूट्यूब पे है, ओपन ही रखा है मैंने. 23J करके J23 प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोग के लिए. क्विकली रिवीजन कर लेने का. क्विकली कॉल का प्लेबैक स्पीड निकाल के आप लिख सकते हो. 2-3 बार अच्छे से याद रहेगा फिर. Now, the trickiest part, which we get to practice the least, and वो कभी कभार आता है एग्जाम में and हम मिस्टेक कर देते हैं. This is the other thing that happens in total RCF. Not requiring any deviation. That is, you are safe to fly as per flight plan. ये ऐसी चीज है ना, इतनी सिंपल है that you don't even realize and you can miss out on it. So what is the call like in this situation? What is the situation? Again, total RCF students. Total RCF है तो ही. Total RCF पे आप कैसे आते हो? अगर डायरेक्टली दिया है तो ठीक है, डायरेक्टली नहीं दिया है तो we'll try to raise the other stations. If those stations don't respond, just by raising the station, okay, don't give the whole call, you'll waste a lot of time. Then you assume total RCF in this case. अगर किसी ने बात कर लिया तो ये कॉल आएगा ही नहीं, आपकी उनसे ही बात होती रहेगी. ध्यान रखना. ओके? इस पॉइंट पे if no one replies पे ये हो रहा है. If someone replies, go according to what you discuss with them. वहां फिर ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड नहीं आएगा शायद. And whenever you connect with a new ATC in such case and they happen to reply, it means आपका total receiver failure नहीं है, transmitter failure नहीं है, probably एक frequency खराब होगी, कुछ छोटा मोटा चीज होगा जहां आप उस ATC से बात नहीं कर पा रहे हो. So you will talk to this ATC and the first thing you'll tell them is negative contact with my ATC. Negative contact with Mumbai control. Negative contact with Invictus control. Negative contact with so and so.
And then you will say, I'm here, and that's what is happening, and this is what I'm doing. Basically, position report ही होगा इन situations में. कोई deviation नहीं है, कुछ नहीं है. Deviation होता आप मांग लेते उनसे ही, मेरे को deviation दे दो यार, आप दे दो, कोई नहीं दे रहा तो यार परेशान हूं मैं बहुत, रिस्क है. आप नहीं दे रहे तो मैं खुद से ले लेता हूँ, फिर खुद से लेने का प्रोसीजर मुझे पता ही है. ध्यान रखना है आपके पास और भी एयरक्राफ्ट में बहुत सिस्टम्स हैं जो आपको प्रॉक्सिमेट एयरक्राफ्ट से बचाते रहेंगे. सो डू नॉट बी स्कैर्ड. एवरीथिंग विल बी taught to you as an airline pilot once you start flying the type rating like 320 or 737 or ATR, whatever you want to choose. वो 3 पे ज्यादा चल रहा है ना बिजनेस. बट तब तक आपको ये बेसिक रखना है कि और रेडियो चला गया तो सब चला गया मेरा, ऐसा. बट ऐसा नहीं होता है, बहुत बैकअप है हमारे पास. मॉडर्न एयरक्राफ्ट में तो इतने बैकअप आप थक जाओगे पढ़ पढ़ के. ये तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स. इट्स लाइक राइडिंग अ साइकिल. ये आरटी. You have to be balanced, otherwise you'll fall and hurt. You have to pedal, otherwise you'll fall and hurt. That's how it's difficult. But then directly, if I give you a 20 lakh bike, if you don't know how to ride a cycle, 20 लाख भी जाएंगे, आप भी जाओगे, और पता नहीं आसपास कितने लोग जाएंगे. तो ये सब करो तो ही वहां पहुंचोगे आप. मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो. Call. How would the call go? You'll make the call to original ATC. Okay. This original ATC is W1. We can say Mumbai Control in this example. We are कुछ situation ही नहीं लिए, so Mumbai Control ले लेते हैं. Victor Tango Alpha Lima Kilo. Transmitting blind. Position report. Added info. जो भी एक्स्ट्रा इन्फो आप दे सकते हो. पोजीशन रिपोर्ट में सब आ गया स्टूडेंट्स. फ्लाइट लेवल, रूट, रेडियल, डीएमई, एस्टिमेट्स, टाइम, सब आ गया. ओके. एडेड इन्फो कुछ एक्स्ट्रा है डाल दो. यहाँ वहां से मिल रहा है, आपके फ्लाइट प्लान से मिल रहा है. कीवर्ड्स आर ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड. इस कॉल का जो भी टाइम होगा उसके हिसाब से आप ये कीवर्ड्स बोलोगे. विल कॉल अगेन एट. ये एट अच्छे से समझना, कंफ्यूज मत होना, कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है. प्रेजेंट टाइम प्लस 0010 आवर्स, दैट इज मिनट्स. आगे के जो भी 10 मिनट है. सो फॉर एग्जाम्पल, if present time is 1400 of call, then you will say will call again at 1410. ऐसा. सो प्रेजेंट टाइम प्लीज अपने कॉल्स पे प्रेजेंट टाइम, ट्रांसमिशन ऑफ द कॉल का टाइम बोलने का आदत आप डाल के रखना. टाइम बोल दो बस. एडेड इन्फो टाइम नाउ यहाँ डाल देता हूँ मैं आपको. जनरली आई डोंट हैव हैबिट टू से टाइम, दैट्स व्हाई. अब आप डेवलप कर लो टाइम नाउ. विल कॉल अगेन एट, जो भी टाइम नाउ है प्रेजेंट टाइम है उसके 10 मिनट्स. देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड कॉल्स. ओके, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, फिर ऐसे हाईलाइट करूंगा आपके लिए. चलो अभी हाईलाइट कर लेता हूँ. दिस इज ब्लाइंड, सॉरी दिस इज इंपॉर्टेंट. वन सेकेंड. ठीक है, मैं इसको ना अंडरलाइन कर देता हूँ. हाईलाइटर इज एक्टिंग अप. दिस इज की. Will call again at this time is key in this. And the most important key is I say again. Okay. Another important key. And you'll repeat the whole call again. Repeat the call given up exactly as it is.
Repeat the above call as it is. तो यहाँ पे कैसा होगा, कैसे सुनाई देगा वो? That is ओरिजिनल एटीसी, वहां पे मेरा मुंबई कंट्रोल हो जाएगा। ओरिजिनल एटीसी मुंबई कंट्रोल, विक्टर टैंगो अल्फा लीमा किलो, ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड। ध्यान से देखना, एग्जैक्ट कॉल रिपीट करना है आपको, तो ऊपर देख देख के लिखना होगा, काम आसान हो जाता है आपका। पोजीशन ओवर so and so waypoint, radial DMA with respect to this VOR. This is my flight level. This is my route. Departed Mumbai so and so time. Estimates ETA. Time now 1400. Okay. Will call again at 1410. खत्म। फिर ऐसे अगेन बोलना नहीं है, नहीं तो आप तो चक्रव्यूह में फंस जाओगे, फिर एक ही कॉल चलता रहेगा। दिस इज ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड कॉल। बाकी एक सिंपल डिस्क्रिप्शन रहेगा लास्ट में। सॉरी, weather deviation, enable RVSM, नो RCF। कोई RCF नहीं है, वेदर डेविएशन enable RVSM देखना है, सिंपल है। ओरिजिनल एटीसी, विक्टर टैंगो अल्फा लीमा किलो, रिसीव्ड बैड वेदर वार्निंग, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो वैसे रीड करना है। अहेड वुड लाइक टू टर्न राइट और लेफ्ट, आप चूज कर लेना, इसका भी रूल्स है, बट यहाँ हाइपोथेटिकल हम यूज कर सकते हैं। वुड लाइक टू टर्न राइट और लेफ्ट, दोनों में से एक ही चूज करना, दोनों ऑप्शन मत दे देना। वो चूज करना जहां कम रूट्स दिख रही हैं एज पर द चार्ट। लेफ्ट में ज्यादा रूट है तो राइट वाला ले लो, राइट में ज्यादा रूट है तो लेफ्ट ले लो, दोनों तरफ है तो जो ज्यादा क्लीन लग रहा है खुला लग रहा है वो ले लेना, राइट या लेफ्ट। वुड लाइक टू टर्न राइट और लेफ्ट फॉर 1 5 nautical miles. Why 1 5 nautical miles, students? Remember, an airway is nothing but when ground stations are connected via routes, this becomes an airway. Here I will say it has a radial 180, it has a radial 000180, and I can just hypothetically name this route Whiskey 49er like this. So this Whiskey 49er becomes an airway, and this airway has a fixed width, just like your highways and roads have fixed width: 1 lane, 2 lane, 3 lane, 4 lane, 5 lane, 10 lane, 0 lanes also on some roads. But here, this and this, both sides, it's 5 nautical miles. Together, we get the width of 10 nautical miles. ये नेविगेशन एग्जाम्स में 1/60 रूल, VOR आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, सॉल्व भी किया होगा। ध्यान रखना, 2 से 4 मार्क इस कॉन्सेप्ट पे नेविगेशन एग्जाम्स में भी आता है। तो आप कितना डेविएट कर रहे हो? हाँ, आप यहाँ चल रहे हो, यू आर फ्लाइंग नाइसली, हैप्पीली, अ वेरी गुड डे, गुड फ्राइडे, वी आर फ्लाइंग। आज सेलिब्रेशन होनी है, कोई ना कोई पार्टी तो होगी, फ्रेंड्स की, कॉलीग्स की, कंपनीज विल सेलिब्रेट इफ नथिंग एल्स। अचानक से मुझे यहाँ पे मिल रहा है बैड वेदर, अरे बाप रे, इसको अवॉइड करना है, यहाँ नहीं जाना है हमें, तो मैं क्या करूँगा? व्हाट विल आई डू? क्या करूंगी मैं? सोचो, यहाँ से 15 नॉटिकल माइल्स तक जाने की बात हो रही है, 5 + 10 हमारे डेविएशन प्रोसीजर, सो दैट फर्स्टली यू आर सेफली अवे फ्रॉम द बिजी स्केड्यूल कॉरिडोर। यहाँ आ रहे हो आप, और यहाँ आने के बाद भी आप सेम लेवल पे नहीं हो, आप लेवल भी चेंज कर रहे हो।
वो level change with respect to two things. Firstly, you don't trouble the other traffic, but in this case, all traffics will be trying to avoid the weather, you know. So जो reciprocal है वो उस तरफ जाएगी, जो इधर है वो उस तरफ जाएगी, ऐसा हो जाएगा. कुछ लोग इस तरफ फ्लाई करते रहेंगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कुछ लोग इस तरफ फ्लाई करते रहेंगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक. इसलिए सबको सिमिलर क्लियरेंसेस, सिमिलर डिफरेंसेस के साथ मिलेगा. तो अगर एक एयरक्राफ्ट राइट जा रही है 300 क्लाइम, हो सकता है बाकी सारी एयरक्राफ्ट को भी राइट एंड 300 क्लाइम ही रखे, ताकि सबके बीच में एक प्रॉपर वर्टिकल सेपरेशन मेंटेन हो. वो एटीसी का काम है. फिर 300 फीट देंगे नहीं देंगे, 500 बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे. दिस इज स्टैंडर्ड एविएशन प्रोसीजर. ओके, एंड देन यू फ्लाई पैरेलल. जब वेदर क्लियर हो गया है, यहां आप आ गए हो, तो एटीसी को वापस बोलो, मैंने उस टाइम पे डेविएशन लिया था आपसे, अब मेरे को वापस भेज दो. So if I've climbed, I'll say give me descend back to my original flight level and then give me permission to join back. ये rejoining clearance आ जाता है फिर यहाँ पे. So your routes related calls, rejoining, crossing, सब आपके basic weather deviation call में आता है. तो आपको लगेगा सर basic weather deviation call easy है. Easy कुछ भी नहीं है. फिर RVSM करेक्शन RCF डेविएशन कॉल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बिकॉज यहाँ पे फिर आपको सिमुलेशन दी जाएगी कि चलो अब क्लियर हो गया वेदर का, आप क्या करोगे. सो क्लियर ऑफ वेदर, प्रेजेंट पोजीशन पैरेलल ऑन डेविएटेड ट्रैक 15 नॉटिकल माइल्स राइट, अप्रोक्सीमेटली. ये क्या हो गया अभी आपका साउथ वेस्ट, कार्डिनल पॉइंट्स नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट हो गया, सॉरी, west. So this here becomes southwest, southeast. So you can say southeast of so and so VOR, approximately so and so nautical miles. या फिर इसे ट्यून इन ही कर लो. ट्यून इन कर लोगे तो आपको रेडियल मिल जाएगा. रेडियल 120 DME, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट पे दिख रहा है यहाँ पे, 100 इनबाउंड, मे बी VOR अल्फा ब्रावो चार्ली, ऐसे ही रैंडम. रिक्वेस्ट डिसेंड टू ओरिजिनल फ्लाइट लेवल, जहां भी आपने 300 फीट क्लाइम किया था, एंड रीजॉइनिंग विस्की 49 और रीजॉइनिंग क्लियरेंस विस्की 49 will rejoin whiskey 49 15 DME inbound Alpha Bravo Charlie. Request descend and rejoining clearance, aircraft clear of weather. रिक्वेस्ट मांगने के बाद रीजॉइनिंग भी मांगना पड़ सकता है, एंड उस हिसाब से रीजॉइन करके फिर अराइवल एंड डिसेंड मांगोगे आगे जाके. तो कंटिन्यूटी आपको रखनी है. तो आइडिया समझ में आया. वाई 145 नॉटिकल माइल्स, बिकॉज आप डबल नहीं ट्रिपल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो रनवे से, एयरवे सेंटर लाइन से. सब लॉजिकल है, सब सिंपल है. आप समझ लो, आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा. आप बस समझ लो, लैंग्वेज आपको आती है, अपने आप कॉल्स निकलेंगे. बस याद रखना है क्या सीखा है. स्टडी दिस 2 minutes. कुछ समझ आया नहीं समझ आया, ये कॉल मैं तब तक खत्म करता हूँ. वुड लाइक टू टर्न राइट और लेफ्ट फॉर 15 नॉटिकल माइल्स एट 10 नॉटिकल माइल्स. तो जैसे ही मैं ये मेरा 10 पे पहुंच रहा हूँ, यहाँ पे 10 नॉटिकल माइल्स राइट, यहाँ से मैं क्लाइम शुरू करूंगा या डिसेंड शुरू करूंगा मेरा 300 फीट. तो अगर मेरा यहाँ पे फ्लाइट लेवल 330 है, तो यहाँ पे मेरा फ्लाइट लेवल आ जाएगा 333 इफ आई एम क्लाइंबिंग. तो बी केयरफुल. ये सब छोटी मोटी चीजें यहाँ वो मेंशन करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा तो मिस्टेक हो जाएंगे. आपको लगेगा सर पेपर तो अच्छा था, पता नहीं पास क्यों हुए, कुछ तो गड़बड़ है वहां पे सेंटर पे. कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ हुई थी गड़बड़ ऐसा. तो यहाँ से क्लाइम स्टार्ट होके आप फिर जो भी रेट ऑफ क्लाइम है, मेरे हिसाब से 300 फीट आपको आधे मिनट में पहुंच जाओगे आप, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, एट द सेफ रेट ऑफ क्लाइम. 600-700 फीट बहुत होता है पर मिनट. ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, डिपेंड्स एयरक्राफ्ट की क्या कैपेसिटी है, मैक्स क्या है, मिनिमम क्या है. Students, talk, okay, if you're confused. Your videos are off. I cannot study your body language, so I don't really know. सिर्फ मी जो सिखा रहा है या आप लोग भी पढ़ रहे हो. DME radial is required. प्रेरित बोल रहे हैं. If in question they ask radio failure takes place, then we have to directly start with transmitter blind
or should we raise the station with other ATCs? Look for keywords. If they mention your ATC is not responding, your ground controller is not responding, no contact with ATC, it means try to call other stations. If it says transmitter failure, receiver failure, total RCF, or radio failure, then assume it's total RCF. Okay. In this case, Jyotsna, radio failure, total RCF can be assumed. Total RCF procedures you follow. If you require deviation, enable RVSM, then pan all aircraft. If you don't require enable RVSM, then just call original ATC, even though you have radio failure, but just do transmitting blind call and proceed as per flight plan. Even if you have total RCF, but no weather or no RVSM situation. समझ रहे हो आप लोग? टोटल आरसीएफ में भी बैड वेदर नहीं है, आरवीएसएम नहीं है, तो आपका ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ही होना है ना? याद रखना, रेडियो फेलियर अज्यूम टोटल आरसीएफ अनलेस देयर आर कीवर्ड्स. ओके, बी केयरफुल. एग्जामिनर कुछ और सिमुलेट कर रहा है, बी केयरफुल, हैंडल इट. Be alert also in this situation because the question paper can change any time if the examiner changes it. At 10 nautical miles, will climb or descend 300 feet. Duration 10 minutes. Please numbers को single digits में read करना है. 10, 15 सब नहीं बोल देना है. पार्ट 2 वाइवा में भी ट्राई करना. 10, 15, 20 ना यूज किया जाए. 10, 15, 20 करके ही हम बोले. Duration 10 minutes to avoid weather. थोड़ा सा पोजीशन रिपोर्ट एलिमेंट डाल दो. Mainly route or route, radial, DME, time, and then लास्ट में बोलोगे रिक्वेस्ट वेदर. ये मेन है. एंड रिमेंबर, कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हो उस पर एम्फेसिस होगा आपका. रिक्वेस्ट वेदर डेविएशन. Study this. A lot of elements. If we take it for granted, we'll miss a few things. सिमिलरली आपको अनेबल आरवीएसएम भी बता रहा हूं मैं. नीचे बता रहा हूं, यहां हमने डायग्राम बना दिया है. अनेबल आरवीएसएम. ओरिजिनल एटीसी. ओके. This is no RCF situation. Please confuse नहीं हो जाना है. These are no RCF situations. Victor Tango Alpha Lima Kilo. Over. So over whatever place. Radial. DME. Flight level. Route. You also mentioned departed. If departure के पास है, कब क्या depart किया, थोड़ा added point मिलेगा आपको. Aircraft enable RVSM due equipment. अभी यहाँ पे मैं फ्लाइट लेवल का आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. फ्लाइट लेवल 310 है सपोज. एयरक्राफ्ट enable RVSM due equipment. Request descend to flight level 270. Why 270? RVSM flight levels are from flight level 290 to flight level 410. तुम्हारा क्या है? Yours is flight level 310. In this example, see, यहाँ पे मैंने लिखा है. This is odd. Last 2 digits देखो odd है. तो तुम request करोगे a non RVSM flight level which is odd
if your original cruising altitude is odd. 320 even है, 310 odd है. 310 से closest क्या है? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला होगा. 410 नहीं है. 1000 फीट जाना पड़ेगा मुझे. 10,000 फीट. नीचे वाला पास है. नीचे वाला क्लोजेस्ट कौन सा है? ऑड. फ्लाइट लेवल 300 ऑड भी नहीं है, इवन है, और ये भी आरवीएसएम फ्लाइट लेवल है, सो इट्स नॉट गोना वर्क फॉर मी. फ्लाइट लेवल 2980 है, ऑड है, बट इट्स ऑल्सो आरवीएसएम, इट्स नॉट गोना वर्क फॉर मी. उसके बाद फ्लाइट लेवल 280 मुझे मिल रहा है, जो इवन है. आरवीएसएम नहीं है बट इवन है, मुझे इवन भी नहीं चाहिए. एंड देन फ्लाइट लेवल 270 मुझे मिल रहा है, जो ऑड भी है और नॉन आरवीएसएम है, तो मैं ये ले लूंगा. रिक्वेस्ट डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 270. अगर नहीं दे रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर 250. और अगर फिर नहीं दे रहे हैं तो ऊपर जाने की बात करो. ऊपर कौन सा मिलेगा नियरेस्ट? फ्लाइट लेवल 430 विच इज ऑड. ट्राई टू फाइंड इट. ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो वो नहीं. रुक मत जाना और डर मत जाना. बस क्लाइम करो, जाओ. क्लाइम डिसेंड है, टॉप ऑफ क्लाइम टॉप ऑफ डिसेंड यूज कर सकते हो आप. एयरक्राफ्ट अनेबल आरवीएस हम हर कॉल में बोलना है. फिर एक बार एयरपोर्ट पहुंच गए तो डिसेंड अराइवल स्टार्ट कर लो एंड लैंड कर दो. पहुंच गए, अनेबल आरवीएसएम हुआ तो क्या हुआ? टिकास फेल हो गया तो क्या हुआ? ऑल्टीमीटर रिडंडेंसी चली गई तो क्या हो गया? मोड चार्ली मोड सेरा ट्रांसपॉन्डर फेल हो गया तो क्या हो गया? ऑटो पायलट फेल हो गया तो क्या हो गया? ऑल्टीट्यूड अलर्टिंग डिवाइस not working, so what? Altitude holding device not working, so what? You can still manage to go to your destination following the simple procedure that you actually learn in RT. जो तुम्हें एयरलाइन सिखाएगी ना, वो सारा ट्रेनिंग मैं करा रहा हूँ आप लोग का इतने अच्छे से. अभी लॉस है ना मेरा तो बहुत, आपका फायदा है ना. दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी. ओके, चलो. स्टडी क्वेश्चंस, वी आर डन. इतना ही, और कुछ नहीं अभी. Study this, see if you have any thoughts, tell me how you're feeling. We are not doing any mock right now, so don't worry about it. Study these things. Once you are done, give me a acknowledgement via Zoom chat. Done. This is my question. These are my doubts. No question, no doubt, sir. I am done. Bas. Take your time, no rush. Baki, whatever concerns you have that we have shared or not shared, remind me today. I'd say we're going to get on calls and fix everything one by one, one by one, one by one. थोड़ा टाइम लग सकता है शाम तक बात होने में, but eventually we'll talk. Take your time and study. And ask. कोई rush नहीं है. Suchita, anything on your mind? Students, you can lower your hands now. Thank you very much. Sir, दुख गए होंगे आपके हाथ. Yes, Suchita. can you scroll up the screen a little? Weather deviation call structure. क्या हो गया? One second, मैंने वो शेयर ही निकाल दिया है. One second, please. Keep asking. Suchita, I'm sharing this. Don't worry, I'm fulfilling your request. Give me a second. Affirm, sir. So we have Prerit, we have Gulshan, Rani. I hope no doubts. Prerit, Gulshan, Rani है तो मुझसे पूछो. Chita, Chavi, Rohita and Ayush. Rohita, Ayush, Suchita, Chavi. See if you have any doubts. Suchita, आ रहे हैं notes आपके पास. पूरा PDF सबको ही भेज रहा हूँ मैं. 2 मिनट लगेगा बस. रोहिता, आयुष, ज्योत्सना, श्रीधर, गुरप्रीत, मुस्कान,
Muskan, Gurpreet, Nukul, Manan not joining in today. Ananya is not here. Risan is not here. Sridhar. Right. देखो कुछ doubts है तो Om, Paul, Tanmay. आई थिंक सबका नाम ले लिया है. एक ना एक तो में से मिस हो ही जाते हैं अनफॉर्चुनेटली. भेजो पीडीएफ, देख लो दिख रहा है नहीं दिख रहा है एंड बता देना मुझे फिर. आई होप आई हैव टेकन ऑल नेम्स जो अभी क्लास में प्रेजेंट है. तन्मय तुम्हारा आ गया ना? आ गया क्या? करिश्मा को नहीं भेजा है. सजल प्रीतम ठीक है भेज देते हैं. काजल को भेज देते. काजल इज नॉट ज्वाइनिंग इन टुडे. ओके वेट. No more doubts, students? Krishna, Pritam, Sajal, Kajal. चलो sent. आ रहा है sending दिखा रहा. Sir, Yes, sir, there Tanmay. is also one similar case, like if there is an RCF plus there is slow decrease in cabin pressure. So our main intention would be, of course, to descend to flight level lesser than 110, of course. And also, is there any possibility of like deviating 15 nautical miles right or left? Because we have discussed this question earlier, and I have written in my notes somewhere, like we have made a deviation of 15 nautical miles towards right and will descend to flight level 100. So I don't know whether I have noted it right or wrong. So I just feel to confirm it. In Victor's control, Victor Tango Sierra Kilo Yankee. How do you read? Radio 5000. In That's Victor's control, disregard. 5000 कोई है नहीं है. प्लीज यूज मत करना. वो आयरन मैन का 3000 था तो मैंने 5000 कर दिया. नहीं एक्चुअली आई वाज राइटिंग द कॉल. तुम जो बोल रहे हो वही कर रहा हूँ. डोंट वरी. Flow decrease in cabin pressure plus RCF. Pan, all aircraft in vicinity. Victor Tango, Alpha Lima Kilo. Flow decrease in cabin pressure. Decrease ऐसे मत लिखना, आप ऐसे लिखना. Flow decrease in cabin pressure. No ATC is responding. For the safety of aircraft and passengers, descending to flight level 100, all exterior lights on, keep a lookout, leaving flight level 350 for flight level 100. Aircraft Boeing 737, passenger on board 120, IFR, Mumbai to Delhi. This basic call will get you good marks on a situation like this. For the safety of aircraft and its passengers. Wait, okay, yeah. For the safety of aircraft and passengers. ये मेन है यहाँ पे. जो आप बोल रहे हो तन्मय वो भी अच्छा आइडिया है. First you deviate and then you descend. The risk associated with collisions will reduce if you deviate and descend. So the standard deviation procedure is what you will follow. That is, you can go 15 nautical mile right or left, parallel to the deviated track. And once you are at 15 nautical mile right or left, parallel to the deviated track, then you can
for the safety of the aircraft and its passengers. Descending to flight level 100. All exterior lights on, keep a lookout. This is one more thing you can do when you have cabin pressure problems. 10,000 feet पे आने के बाद घूमते फिरे मत, इमरजेंसी लैंडिंग करो आसपास और लैंड कर लोगे, डेस्टिनेशन दूर है तो पहले नीचे आ जाओ, फिर कहीं ना जाके लैंड कर लो। वेट मत करो पूरे प्रेशराइजेशन का फेल होने का। पूरा प्रेशराइजेशन फेल हुआ है, शायद इंजन फेलियर भी हो सकता है, आगे जाके पावर फेलियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तुरंत आसपास, डेस्टिनेशन दूर है तो प्रिपेयर फॉर एन इमरजेंसी लैंडिंग एंड क्लियरेंसेज एट द नियरेस्ट एयरपोर्ट ऑल्सो। स्टूडेंट्स ईमेल चेक करो, क्लास नोट्स इसके पहले तक के आ गए हैं, ये आप पिक्चर ले लो, मैं दोबारा नहीं सेंड करना है ना। ये आप लिख लो फटाफट। वैसे मैं कर सकता हूँ, आई डोंट माइंड, बट ये लिख लो, ये अच्छा है। चलो आपको लास्ट चीज बता दूं फिर मैं, इंजन स्टॉल एंड सर्ज। यस सर। अरे थैंक यू गुरप्रीत, तुम मना करते तो मैं नहीं बताता। आई होप यू ऑल गेट माय जोक स्टूडेंट्स। बुरा तो नहीं लगता ना किसी को? मुस्कान पूछ रही है सर, टर्निंग राइट क्लाइंबिंग करना है, टर्निंग लेफ्ट डिसेंडिंग करना है। इट्स समथिंग टू डू विथ वेदर योर course or track is easterly or westerly. There are rules. If you are done with everything, थोड़ा flight rules, rules of the air में देखो, कुछ मिलेगा आपको। But hypothetical is fine. Otherwise, कहीं आओ आगे कोई नोट्स है, थियरी है, वहां से रिफर कर रहे हो तो मुझसे शेयर कर लेना, I'll confirm whether that's right or wrong. But hypothetical is fine here. But generally, वेस्टर्ली ईस्टर्ली से मैटर करता है, आपको क्लाइंब ही करना है या डिसेंड ही करना है 300 फीट। देयर इज अ रूल टू दैट, बट रूल्स ऑफ द एयर में देखो कहीं मिल रहा है तो, नहीं तो गो विद हाइपोथेटिकल, नो प्रॉब्लम देयर। एटीसी ज्यादा नेगेटिव बोलेगा तो समझ आना, क्लाइंब नहीं मिल रहा है तो मैं डिसेंड मांग लेती हूँ, और राइट नहीं मिल रहा है तो मैं लेफ्ट मांग लेता हूँ। सो बी वेरी अलर्ट, एंड कोई क्लियरेंस नहीं मिलता है तो उसका ऑपोजिट मांग लो या कुछ और मांग लो, मांगते रहो, रुक मत जाना। अच्छा नहीं दे रहे हो, ठीक है, आई एम गॉड, आपकी गलती है, नाउ आई एम गोइंग टू मीट गॉड। ऐसा नहीं होता है ना, सो रिमेंबर दैट, ओके। बी वेरी फ्लेक्सिबल, बी वेरी केयरफुल। जोक्स तो ठीक है हम मार लेते हैं, बट दीज आर सिचुएशंस दैट आर रियली सीरियस। आप लोग को लगता है आप स्टूडेंट हो, डाउन द लाइन यू आर गोना बी देयर, एंड आई ऑलवेज ट्रीट यू एज समवन हु इज इन द एयरलाइन। आई डोंट ट्रीट यू एज समवन हु इज कैरिंग अ बैकपैक एंड गोइंग टू स्कूल। इंजन स्टॉल एंड सर्ज, ओके। सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है। आपका जेट इंजन से कनेक्टेड है ये, ठीक है। प्रोपेलर एयरक्राफ्ट पे हम स्टॉल जनरली यूज नहीं करते हैं, वर्ड प्रोपेलर ब्रेथ स्टॉल हो रही है, वो सब हम बोलते नहीं है जनरली। इंजन में होता है। जेट इंजन का क्या है ना, जेट इंजन ऐसा कुछ दिखता है, दिस इज द इनलेट, ओके, एयर इनलेट आई कैन से। इनलेट जनरली आपको नॉमेनक्लेचर में मिलेगा नहीं जेट इंजन के। आपको क्या मिलेगा पता है? आपको मिलेगा फैन, पहली चीज, फैन। ये फैन क्या होता है? इट्स एन इम्पेलर, ओके, दिस फैन इज एक्चुअली एन इम्पेलर। ये इम्पेलर है ना, हवा को अंदर खींचता है, ठीक है, हवा को अंदर खींचेगा इंजन के, एंड थोड़ा सा कंप्रेस भी कर देता है। दिस कंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्रेशन नहीं होगी तो हमें एयर मास मिलेगा ही नहीं थ्रस्ट जनरेट करने के लिए। इंजन का पर्पस ये है कि फ्यूल एयर को मिक्स करो एंड थ्रस्ट दो। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें फॉरवर्ड मोशन मिलेगी, वो फॉरवर्ड मोशन से ही मुझे लिफ्ट मिलेगी। तो इंजन के बिना तो हम फ्लाई नहीं कर सकते। अगर इंजन नहीं है तो मुझे 200 लोगों को धक्का मरवाना पड़ेगा प्लेन, फिर भी प्लेन नहीं उड़ने वाली है। सो इट इज लाइक दैट। बट पुराने जमाने में वैसे ही होता था टेक ऑफ, लाइक गाड़ियों से, लाइक ग्लाइडर्स भी अभी भी वैसे ही टेक ऑफ होते हैं। ग्लाइडर्स डोंट हैव इंजन, तो गाड़ी खींचती है उनको। या फिर आप एक स्लोप से उतरते हो, फिर वैली में कूद जाते हो सीधा, एंड भगवान भरोसे। इट्स अ ट्रेनिंग, यू ट्रेन एंड यू फ्लाई, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट यस। तो ये फैन हो गया। फैन थोड़ा सा थिक होगा, कैसा भी होगा। फैन के बाद दूसरा स्टेज आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक मेन शाफ्ट बोलते हैं, जो सारी चीज को कनेक्टेड रखता है, एंड उसके आसपास ऐसा हमारा कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर दो टाइप के होते हैं, लो प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर कंप्रेसर, ठीक है। तो एक फैन हो गया, कंप्रेसर हो गए। कंप्रेसर बहुत जरूरी है, एंड इन पे छोटी छोटी एरोडायनेमिक ब्लेड्स होती हैं,
ठीक है, ये जो ब्लेड्स है ना, एयर आपकी जो ये ब्लेड्स पे जाती है, आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू एवरी ब्लेड एयर कंप्रेस होती है, दूसरी ब्लेड पे और कंप्रेस हो जाती है, तीसरी ब्लेड पे और कंप्रेस हो जाती है। कितने भी ब्लेड हो दो, 10 20 30 40, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंजन। आजकल के इंजन कॉम्पैक्ट हो गई है, पुरानी इंजन लंबी होती थी। तो ये एक एक ब्लेड जो है ना, वो ब्लेड भी एरोडायनेमिक होती है। इट इज एन एरोडायनेमिक एरोफॉइल, द ब्लेड, एंड इट बिहेव्स सिमिलर टू हाउ द विंग बिहेव्स। हमारा विंग कैसे बिहेव करता है, एरोफॉइल, एयर गोज अप, एयर गोज डाउन, प्रेशर डिफरेंस, एयर ट्रेवल्स फ्रॉम विच प्रेशर टू विच प्रेशर, हाई टू लो, लो टू हाई। याद करो अगर याद नहीं है। एंड दैट प्रेशर डिफरेंस एक्चुअली लिफ्ट्स द प्लेन अप। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कैम्बर। सिंपल। ये सेम चीज हमारे कंप्रेसर ब्लेड्स में भी होती है। हमारे फैन भी एरोडायनेमिक है, कंप्रेसर ब्लेड्स भी एरोडायनेमिक है, सब एरोडायनेमिक है इनसाइड द इंजन। अभी हमें पता है दैट देर इज एन एंगल ऑफ अटैक फॉर एवरी एरोफॉइल। जिसको ये सब नहीं पता है, इवेंचुअली यू विल लर्न इट स्टूडेंट्स। बाउंसर जा रहे हो तो अच्छा है, कम से कम आज इंट्रोडक्शन तो हो रहा है तुम्हारे लिए। ये सब के बिना ही आप लोग पेपर्स वेपर्स क्लियर कर लेते हो, पता है। इट्स इन अनहेल्दी आई से, बट ठीक है, आपको बता रहे हैं। तो ये एंगल ऑफ अटैक एक लिमिट तक ही सही रहता है। दिस कुड बी -4 degrees to probably +32 degrees or +36 degrees also, including flaps and augmentation systems. तो ये 0 डिग्री हो गया, तो माइनस से लेके आप प्लस तक 32 डिग्रीज तक, या 32 और 36 डिग्रीज तक ऊपर कर सकते हो। द मोर एंगल ऑफ अटैक यू हैव, द बेटर इज योर क्लाइंब। ओनली अप टू अ क्रिटिकल एंगल। सो एक क्लाइंब नहीं मिलेगा मुझे, ऐसे ऐसे करूंगा तो ही क्लाइंब मिलेगा। सो दैट इज एंगल ऑफ अटैक। एक पॉइंट से ज्यादा मैं एंगल ऑफ अटैक बढ़ाता हूं ना, एयरक्राफ्ट स्टॉल हो जाती है। एयरक्राफ्ट क्या, सिर्फ विंग भी आप ऐसा करोगे स्टॉल हो जाएगा। पेपर प्लेन भी बनाओगे ना, स्टॉल हो जाएगी। और तो और अपना हाथ गाड़ी के बाहर रखना सेफली, कभी थोड़ा सा निकाल के, जहां पोल्स ना हो, व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन अ हाईवे, क्लीन हाईवे, प्लीज हाथ वाथ लगना नहीं चाहिए आपको। यू कैन एक्चुअली मेक एन एरोफॉइल एंड लूज हाथ रख दो एंड देखो क्या हो रहा है हाथ को। यू कैन एक्चुअली सी सेफ 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 स्टॉल, सेफ क्लाइम 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 स्टॉल, क्लाइम 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 स्टॉल, और नेगेटिव स्टॉल। लाइक नेगेटिव स्टॉल नहीं बोलते, बट दिस ऑल्सो कैन डिच यू, दिस विल स्टॉल यू। Actually everything, it is there if you experience. Stall कभी भी हो सकता है, स्टॉल इज नॉट गुड एरोफॉइल्स के साथ। ये जो मेरी कंप्रेसर ब्लेड्स हैं, ये भी एयरफॉइल्स हैं। इंजन में क्या होता है, एयर पूरा कंप्रेस होने के बाद एक कंबशन चेंबर में जाता है, सिलेंडर्स होते हैं। कंबशन चेंबर में हमारा एक फ्यूल स्प्रे होता है, एंड यहां से आती है एयर, कंप्रेस्ड एयर। इन दोनों का मिक्सचर बनता है, एंड ये मिक्सचर इग्नाइटर्स के थ्रू, ये इग्नाइटर स्पार्क क्रिएट करते हैं, बस्ट करता है। या तो कॉमन होगा कंबशन चेंबर, सिलेंड्रिकल, या छोटे छोटे सिलेंडर्स होंगे। बहुत टाइप से इंजन में आप पढ़ोगे जब आप टेक्निकल करते हो। इसके बाद ये 3 सेगमेंट हो गए, चौथा सेगमेंट होता है टरबाइन। देयर इज अ रीजन वी कॉल दिस इंजन टरबाइन इंजन। I love the turbine a lot. It is the strongest material in the aircraft. If you want to determine which is the strongest material, the most heat resistant, the highest quality, जो कभी खराब नहीं होगा, कितना भी heat होने दो, what is that material? That is in the turbine blades of a jet engine. Okay. ये टर्बाइन पे आपका एग्जॉस्ट गिरता है एट फुल फ्लो। ओके, एंड ये भी एरोफॉइल होते हैं टर्बाइन ब्लेड्स। वो जो हाई प्रॉक्सिमिटी, हाई स्पीड कंबशन एक्सप्लोजन बाहर जाता है, वो टर्बाइन को इतने जोर से घुमाता है कि वो टर्बाइन अपने ये शाफ्ट को वापस घुमाने लगता है गोल गोल। एंड जब ये शाफ्ट घूम रही है तो हमारा फैन, जो इम्पेलर बोल रहा था फैन, वो और ज्यादा घूमने लगता है। जब वो और ज्यादा घूमता है, वो और एयर को अंदर खींचता है। जब ज्यादा एयर आती है, ज्यादा कंप्रेशन होती है। ज्यादा कंप्रेशन में क्या होता है, फ्यूल एयर मिक्सचर में ज्यादा एयर मिलती है मुझे, सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल। वो ज्यादा एयर मुझे ज्यादा कंबशन देके ज्यादा टर्बाइन को मूव कर रहा है। ज्यादा टर्बाइन मूव कर रहा है तो ज्यादा वापस से मेरा इम्पेलर घूम रहा है। तो इट बिकम्स अ क्लोज्ड मशीन। इट बिकम्स अ परपेचुअल मशीन एज लॉन्ग एज यू प्रोवाइड फ्यूल। सिर्फ आपको फ्यूल डालना है, बाकी जेट इंजन इज अ मिरेकल। If 5-10 years you invest in research,
I am sure you can come up with time where you can come up with a strategy and a design of an engine where you can reduce the fuel used today by 80 to 90% also in future. इतनी अच्छी इंजन है हमारी. But people don't go there because I don't know. Possible नहीं होगा शायद इतनी जल्दी. But in 100 years down the line when fossil fuels run out, probably whatever the truth is, हो सकता है. But what are we doing here actually? This is how the engine works. Okay? हमें थ्रस्ट कहाँ से मिल रहा है? एग्जॉस्ट से मिल रहा है. बाकी टरबाइन को घुमाने के बाद जो भी एनर्जी बची है ना, वो एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है. दिस इज व्हाट वी कॉल ए जेट वेलोसिटी. दिस इज द एग्जॉस्ट सेक्शन. अब ये जो जेट वेलोसिटी है, इसकी जो वैल्यू है, इक्वल एंड ऑपोजिट आपको थ्रस्ट मिलता है. सो इमेजिन ये एग्जॉस्ट कितना पावरफुल है. इसलिए आपको एप्रन पे, पार्किंग बे पे हाई पावर रनअप की परमिशन नहीं मिलती है, बिकॉज पीछे बहुत लंबा जाता है. ये बहुत हाई स्पीड में इट कैन एक्चुअली पार्क्ड एयरक्राफ्ट को भी डैमेज कर सकता है, व्हीकल्स, ह्यूमन, सबको डैमेज कर सकता है. प्लस इट्स टॉक्सिक एग्जॉस्ट फ्यूम्स. तो स्टॉल एंड सर्च क्या होता है? whenever you are taking off, one of the compressor blades can stall. If that stalls, the compression of the air is not correct. कोई भी एक ब्लेड भी यहाँ स्टॉल कर गई ना, कोई भी एक ब्लेड, कंप्रेशन रेशियो में गड़बड़ आएगा एंड इंजन विल वाइब्रेट लाइक दिस वन इंजन. जनरली लेफ्ट इंजन पे ही ज्यादा स्टॉल होता है ड्यूरिंग टेक ऑफ, एंड स्टॉल एंड सर्च टेक ऑफ पे ही होता है सबसे ज्यादा. इसलिए टेक ऑफ सबसे क्रिटिकल होता है. जो इंजन में प्रेशर होता है, फ्यूल एयर मिक्सचर में कभी कभी डेब्रीज आ सकती है, फॉरेन ऑब्जेक्ट आ सकता है, मॉइस्चर आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है जहां से हमारा कंप्रेशन सही नहीं हो या कंप्रेसर ब्लेड स्टॉल कर जाए. स्टॉल तो ठीक है, स्टॉल हो गया, स्टॉल इज नॉट अ बिग डील. स्टॉल हो गया, स्टॉल के बाद कुछ नहीं हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग करके आ जाओ. स्टॉल हुआ तो भी इमरजेंसी लैंडिंग करनी है. स्टॉल कैसे हुआ, कुछ तो आपको फील होगा. पायलट विल नॉट नो स्टॉल एंड सर्ज हुआ है. पायलट को लगेगा इंजन फेलियर हुआ है. वो बाद में पता चलता है स्टॉल और सर्ज हुआ है. एग्जाम में ऐसे दे दिया स्टॉल और सर्ज. पायलट को इतना बड़ा जीनियस नहीं है कि अरे स्टॉल और सर्ज ही हुआ होगा इंजन में. पायलट डजंट नो. पायलट को लगेगा कोई एफओडी गया, कोई बर्ड गया, कुछ भी हो सकता है, बट इंजन फेलियर हुआ है. तो आपको स्टॉल एंड सर्च, एग्जाम में स्टॉल एंड सर्च बोलना ही नहीं है, इंजन फेलियर बोलना है. रिक्वेस्ट लैंड बैक, अगर सिंगल इंजन है तो रिक्वेस्ट इमरजेंसी लैंडिंग बैक एट द डिपार्चर एरोड्रोम और द नियरेस्ट एरोड्रोम अगर बीच में कहीं हो. ओके. डुअल इंजन स्टॉल एंड सर्च है तो फोर्स लैंडिंग स्ट्रेट अहेड, मतलब बोथ इंजन फेलियर, मेडे मेडे. तो सिंगल इंजन स्टॉल सर्च, पैन कॉल, इंजन फेलियर, लैंड बैक एट द डिपार्चर एरोड्रोम वाया इमरजेंसी लैंडिंग और एनी एरोड्रोम इमरजेंसी लैंडिंग नियर. डुअल इंजन स्टॉल एंड सर्च, कंप्लीट इंजन फेलियर, मेडे मेडे मेडे, फोर्स लैंडिंग स्ट्रेट अहेड. क्रैश ही होनी है वो एयरक्राफ्ट अगर एयरपोर्ट नहीं है आसपास. तो क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉल क्या करना है? कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, इतना पता है स्टॉल सर्च मतलब इंजन फेलियर, तो भी आप पास हो जाओगे. दिस इज हाउ यू कनेक्ट इंटेंट दैट यू हैव नॉट लर्न टू बेसिक आरटी. ये चीज आप बस पिकअप कर सकते हो कभी भी कुछ सोल्यूशंस करते हो बाहर के. अच्छा ये वर्ड क्या है, इसका इंटेंट क्या है. बाकी तो कॉल मेरे को लेना है, सिंपल वर्ड्स में लेना है, इंजन फेलियर ही बोलना है. देन यू सी नो मैटर हाउ मेनी क्वेश्चन पेपर्स यू डू, 5-5 सेकंड में एक पेपर हो जाएंगे आपके. एंड सिर्फ इंटेंट ही निकालना है अलग से, कुछ जो आपने नहीं पढ़ा है. That's the only way I suggest you do papers. सर्च क्या होता है? स्टॉल हो गया कोई बात नहीं. सर्च मतलब ये जो हमारा आग लगी है ना यहाँ पे, वो आग यहाँ आ जाती है चुपके से, बिकॉज प्रेशर बैलेंस चेंज होता है. एक भी हमारा कंप्रेसर स्टॉल हो रहा है, कंप्रेसर ब्लेड स्टॉल हो रही है, और यहाँ आ गई ना फ्यूल एयर मिक्सचर, तो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है. एंड ये ब्लास्ट मेरा कंप्रेसर ब्लेड को डैमेज कर देता है, इंजन मेरी फायर पकड़ लेती है. सर्ज मतलब इंजन फायर. स्टॉल मतलब इंजन मैकेनिकल फेलियर. मैं फेलियर जानबूझ के बोल रहा हूँ. एंड स्टॉल विथ सर्ज मींस इंजन को फायर आ गई है, इंजन शट डाउन करो फटाफट, फायर एक्सटिंग्विशन प्रोसीजर्स इनिशिएट करो, इमरजेंसी लैंडिंग बैक टू दी नियरेस्ट एरोड्रोम और डिपार्चर एरोड्रोम अगर टेक ऑफ पे हो रहा है तो. सिंगल इंजन है पैन, डुअल इंजन है मेडे. दैट्स द कॉल. So stall is just stalling some structural damage, इंजन शट डाउन कर ही देना अगर आपको टर्बुलेंस हो रहा है. सर्च में तो फायर है तो फायर वार्निंग आपके कॉकपिट में तुम्हें दिखेगा नहीं, कुछ फील नहीं होगा, एंड केबिन क्रू एंड पैसेंजर्स को भी शायद पता ना चले इतनी जल्दी, बट टर्बुलेंस फील होगा आपको.
और आपको इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में ड्रॉप मिलेगा। आपका N1 N2 आपको सब होता है, कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 क्या आरपीएम पे घूम रहा है, फैन का आरपीएम अगर मेजर हो रहा है तो कंबशन चेंबर का टेम्परेचर, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर भी मेजर होता है, टरबाइन भी मेजर होता है। तो आपके पैरामीटर्स आपको एबनॉर्मल लगेंगे, आपको पता चल जाएगा। और फायर वार्निंग सिस्टम आ रहा है तो इनिशिएटिंग engine fire extinguishing procedures, shutting down left engine, request immediate assistance to land back at aerodrome, Mumbai, request emergency landing, so and so। यहाँ ओवरवेट सेक्टर नहीं करना है। अगर आपको रिस्क लग रहा है सिंगल इंजन पे कर सकते हो, बट यहाँ मत करना, बिकॉज एक इंजन चली गई है, दूसरी जाने वाली एयरपोर्ट पास है, दूसरी गाय जाए ना जाए एयरपोर्ट पास, आप लैंड करके सेफ हो जाओ। यू नेवर नो फायर बुझी है नहीं बुझी है। सो दैट इज स्टॉल एंड सर्च इंजन फेलियर। डिटेल में भी बता दिया है आपको, कहीं ना कहीं काम आएगा। बट कॉल इंजन फेलियर रिलेटेड ही लेना है। सिंगल इंजन है तो भी आ जाओ, डबल इंजन है तो फोर्स लैंडिंग है, फिर आ नहीं पाओगे आप कितना भी ट्राई कर लो। एग्जाम्पल है सली, समझ रहे हो? एनीथिंग एल्स ऑन योर माइंड्स? आई होप यू हैड फन लर्निंग समथिंग डिफरेंट विद जेट इंजन, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। आप नींद में भी मुझे उठा लो आपको टेक्निकल पढ़ाने के लिए, कर सकता हूँ बस। यस गुलशन। Sir, during initial climb, if you face RCF, तुम डिसाइड करो क्या करना है। मुस्कान, व्हाट्स योर क्वेश्चन? sir, if it is not the like the तुम भेजो clearance, मुझे कॉल बना के भेजो कॉल। मुस्कान, व्हाट्स योर क्वेश्चन? Sir, the sector calling will only go for flap stuck. कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है, फ्लैप स्टक में तो होता ही है। फ्लैप स्टक में आप लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकते हो, इंजन फेलियर नहीं है तो आप ओवरवेट लैंडिंग का रिस्क नहीं लोगे। अगर आपका कोई सेकेंडरी कंट्रोल फेलियर है सिस्टम, या कुछ ऐसा है जो आपको क्रैश नहीं कराने वाला है, आपको लैंड करना है, ओवरवेट लैंडिंग नहीं करनी है, तभी आप सेक्टर मांगोगे। सेक्टर कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद VOR calibration, ILS calibration, search and rescue, mineral survey and training flight also। तो सिर्फ फ्लैप स्टक में नहीं है सेक्टर, कई जगह पर है। कीप एन ओपन माइंड। समझना है, अगर फोर्स लैंड नहीं हो रहा है, लो ऑल्टीट्यूड कंट्रोल कर पा रहा हूँ कर पा रही हूँ, तो ही मैं सेक्टर एंड फ्यूल एग्जॉशन की बात करूंगा। इंजन फेलियर है, टाइम क्रिटिकल है सिचुएशन, टाइम नहीं है मेरे पास, तो सेक्टर वेक्टर फिर नहीं मांगना है मुझे। समझना है इस चीज को ध्यान से, ठीक है? गुलशन, क्लियरेंस नहीं दिया है, सोचो क्या करोगे अभी। ये सब मेरे को मत डालो ऐसे सब सिचुएशंस में, ये सब बेसिक है, आपको खुद से निकलना है। गिव मी अ सोल्यूशन, वो गलत होगी तुम्हारी तो मैं करेक्ट करूंगा तुम्हें। दो मुझे कुछ वहां पे एक चीज अच्छा सा, लेट मी सी व्हाट यू कम अप विद, बिकॉज दैट्स वन चैलेंज वेयर आई वांट यू टू मेक डिसीजंस ऑन योर ओन। दो कंफ्यूजन है, आप तीसरा करते हो, देखते हैं यहाँ पे क्या करते हो। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वो लगता डिफिकल्ट है क्योंकि आपने शायद प्रैक्टिस नहीं किया है, बट गो विद व्हाट आई हैव टॉट यू। कैसे हैंडल करते हैं ऐसे सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉजिकली सोचो, समझ आ जाएगा सब कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना है। एज अ पायलट सोचो क्या करना है। इनिशियल क्लाइम में क्लियरेंस मिला बिना आपको इनिशियल क्लाइम नहीं मिलता आरसीएफ है, तो क्या हो गया? जहां टॉप ऑफ क्लाइम जहां तक का दिया है वहां तो चले जाओ, वहां जाके नेक्स्ट एटीसी से पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है, मेंटेन कर रहा हूँ, रेडियल है, बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पे। कम ऑन स्टूडेंट्स, थिंक थिंक थिंक। एनी मोर क्वेश्चंस गुलशन, और क्या है दिमाग में? Sir, if jet exhaust is more, we get more thrust, right? हम्म, And how is this related to the fan? How will the fan work then? In this case, fan will move at a higher RPM, right? everything is connected by one shaft in the center, they all are concentric। टर्बाइन पीछे होता है, फैन आगे होता है। टर्बाइन जितना ज्यादा घूमेगा फैन भी उतना ही घूमेगा। सो इनिशियली जब आप इंजन स्टार्ट करते हो, वी कॉल इट क्रैंकिंग, तब आपका टर्बाइन नहीं घूमता है, तब आपको इंजन को मैनुअली स्टार्ट करना होता है। पुराने जमाने में सारी इंजन, सारी कार, सारी एयरक्राफ्ट ऐसे ही चलती थी, हैंड क्रैंकिंग हम लोग करते थे। बाइक्स में अभी भी किक मार के स्टार्ट करना पड़ता है। हम किक क्यों मारते हैं? क्योंकि पहला ड्राइव हमें देना होता है, बाकी इंजन बाद में खुद ही पिकअप कर लेती है। ठीक है, सारी इंजन, पिस्टन भी हो गई, जेट भी हो गई।
तो यहाँ पे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर 1 इंजन लेफ्ट थ्रू एन ऑल्टरनेटर और अ जनरेटर। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई मेरा जाता है। वहां से मैं एक ड्राइव लेता हूँ। वो ड्राइव मेरा कहाँ से इंजन को ड्राइव कर रहा है? वो या तो फैन हो सकता है, वो या फिर ये शाफ्ट भी हो सकता है कहीं पे भी। ठीक है, जैसे भी वो इसको घुमा रहा है, आपका जैसे एक एक टर्न शुरू हो गया आपका, बस एक टर्न आपको करना है मैनुअली। वो टर्न से क्या धीरे धीरे आपका फैन इनपुट देता रहेगा आपको। थोड़ा बहुत फैन भी कंप्रेस कर जाता है आजकल के एयरक्राफ्ट में। टर्बो फैन एयरक्राफ्ट में तो बहुत कुछ होता है, जहाँ इंजन में कम कंप्रेशन होता है, बाहर कंप्रेशन ज्यादा होता है, जहाँ हमारा वेट एंड ऑल सब सस्ता हो जाता है, एकदम सस्ते में काम हो जाता है, पोल्यूशन भी नहीं होती। बट वो सब आप बाद में सीखोगे। यहाँ पे क्या होता है, एक बार हैंड क्रैंकिंग कर दी मैंने, फिर मेरा फैन जैसे ही एयर अंदर ले रहा है, फ्यूल एयर मिक्सचर ऑटोमेटिक काम करता है, इग्निशन भी ऑटोमेटिक काम करता है। थोड़ी सी एयर आ गई ना, थोड़ा सा कंबशन हो गया, यहां तक पहुंचने में वो थोड़ा सा कंबशन है ना, थोड़ा सा एग्जॉस्ट देता है। तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट मेरे टर्बाइन को, जो मैंने पहले पेस में घुमाया था, उससे ज्यादा फास्ट घुमाता है। स्टूडेंट्स, टर्बाइन इज ए जेनेरिक टर्म जहां पे हम नेचुरल ड्राइव लेते हैं टू मूव अ शाफ्ट टू प्रोड्यूस द ड्राइव दैट वी नीड। विंड मिल्स जो हवा से अपने आप घूमते हैं, उनमें भी एक टरबाइन होता है। वो टरबाइन आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। डैम्स जहाँ पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे भी टरबाइन होता है। वो टरबाइन पानी से घूमता है, पानी के फ्लो से। वो घूमने वाले टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं। समझ रहे हो? टरबाइन, गैस टरबाइन, आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो भी टरबाइन ही जनरेट कर रहे हैं। दोज टरबाइंस आर नोन एज एसी जनरेटर्स और डीसी जनरेटर्स। ओके, ये डानो में रिलायंस का बहुत बड़ा पावर स्टेशन है, जो पहले बीएसईएस का था। एंटायर मुंबई एंड एंटायर दैट पार्ट गुजरात एंड मुंबई आर प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी बाय दैट वन पावर हाउस। कैसे जनरेट करते हैं वो लोग? दे गेट मेगा टन्स ऑफ कोल, दे पुट द कोल इन अ combustion chamber, they burn the coal, the combustion, the heat turns a turbine, huge turbine size of a bungalow or a building. That turbine generates megavolts of electricity, and that electricity is passed through everyone. So कितना कोल खरीद रहे हैं और कितना उनका मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट है एम्प्लॉइज, माइनस जितना आपका बिल आप भर रहे हो, जो भी सरप्लस है वो उनका प्रॉफिट होता है। ऐसा होता है। तो जब तक कोल है तब तक इलेक्ट्रिसिटी है। इट्स अ वेरी, आई लाफ एट दिस बिकॉज आज भी कोल पे जी रहे हैं हम लोग। तो दैट इज टरबाइन। एक बार घुमा दो, बाकी वो टरबाइन है ना, ये टरबाइन हमारा कैसे घूम रहा है यहाँ पे? ये टरबाइन हमारे एग्जॉस्ट गैस के फोर्स से घूम रहा है, बिकॉज ऑफ एरोडायनेमिक इंपेलर्स एंड ऑल। सब जगह एरोडायनेमिक इंपेलर्स एंड ब्लेड्स होंगी। जैसे ये टरबाइन फास्ट घूमता है, एवरी द फैन एंड द टरबाइन आर कनेक्टेड विद दिस कॉमन शाफ्ट। मैं बोल रहा हूँ कब से, दोनों ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, लाइक ऐसा 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 ऐसा। तो जैसे ये फास्ट घूमने लगता है, ये शाफ्ट भी फास्ट घूम के फैन को और फास्ट करता है अपने आप। जैसे ये और फास्ट हो रहा है, ये और एयर को भेज रहा है, और एयर को भेज रहा है, ये और कंबशन कर रहा है, और कंबशन से टरबाइन और फास्ट हो रहा है। टरबाइन और फास्ट होने से ये मेरा शाफ्ट वापस फास्ट हो रहा है। इसको हम स्पूल बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फैन एंड टरबाइन और कंप्रेसर एंड टरबाइन। सिंगल स्पूल, डुअल स्पूल, ऐसा होता है। स्पूल मतलब एक रॉड जहाँ पे कुछ चीजें घूमती रहती है। इट्स ऑल मैकेनिकल common words that are commonly applied to engine also, not just engine specific. Some of them are engine specific. तो मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स लाइक अ परपेचुअल। परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग। यू डोंट नो स्टूडेंट्स, बट दुनिया में बहुत लोग हैं जो परपेचुअल इंजन बनाने के पीछे लगे हैं, ताकि फ्री में वो लोग स्पेस फ्लाइट कर सकें। So a turbine is connected to a shaft that is connected to the fan. The more the turbine moves, automatically the fan will move. But to start the engine, first you move the fan or crank the turbine, whatever you can to get it going. वो आपको artificially induce करना पड़ता है। तो आप सोचोगे सर ये कब तक चलता है? 100% जो कैपेसिटी है ना, तब तक ये बिल्डअप होते रहता है। एक बार इंजन की 100% कैपेसिटी आ गई, उसके ऊपर नहीं जाता है ये सब। फिर द reason jet engine is safe because its max output is 100%। तो ओवरहीट नहीं होती इंजन कभी। होगी जब फायर होगा तब एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर एक्स्ट्रा हो सकता है, बट बेसिक पैरामीटर्स में हम इंजन को मैक्स आउट ही रखते हैं। अगर हम इंजन को 80% रखते और 20% बफर रखते हो, 20% कुड हैव रिजल्टेड इनटू एक्सीडेंट्स। तो ये तब तक चलता रहेगा जब जो भी इंजन का मैक्स कैपेसिटी है थ्रस्ट जनरेट करने का, वो उस पर पहुंचता नहीं है, तब तक ये इंक्रीज होते रहेगा। एक बार पहुंच गया उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा।
फिर वो मैक्स आउटपुट देगा। तो 100% थ्रस्ट आप रख रहे हो, मतलब 100% इंजन हो गई है। 20% थ्रस्ट रख रहे हो आप, मतलब सिर्फ 20% पे काम कर रहा है, मतलब वो फ्यूल एयर मिक्सचर उतना ही जा रहा है। सो यू आर कंट्रोलिंग द फ्यूल एयर मिक्सचर। वहां पे भी फ्यूल इज द सेम, एयर आपका बस चेंज होता रहता है। तो एयर तो फ्री में मिलती है ना आपको। इट्स लाइक दैट। और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पूछो। कम ऑन, वी आर ऑलमोस्ट डन। ओम पूछ रहा है, कैन वी जॉइन एटीसी सर्किट टू लैंड बैक इफ आरपीएस वाइल इनिशियल क्लाइंब विद ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड? अभी देखो ध्यान रखो, मेजर टोटल आरसीएफ नहीं है तो ट्राई टू गो टू एज पर द फ्लाइट प्लान एंड डेस्टिनेशन। क्वेश्चन पेपर में देख लो आगे के क्वेश्चंस, मतलब आगे के हैं, मतलब आपको जाना ही है। अगर कुछ मेजर इशू है आरसीएफ के साथ जहां तुम्हें लग रहा है तुम नहीं जा सकते हो, तो ही लैंड बैक करो। नहीं तो अगर क्लियर्ड है, कोई मेजर इशू नहीं है, तो कंटिन्यू ना, आरसीएफ ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड कंटिन्यू ना, प्रॉब्लम क्या है? थिंक विथ रिस्पेक्ट टू सेफ्टी। ओम, वो तुम्हारा क्वेश्चन था। हाँ सर गुलशन बोलो। सर एटीसी ऑफ द एयर मींस टोटल आरसीएफ, राइट? एटीसी ऑफ द एयर मतलब तुम्हारा एटीसी नहीं है। कितने बार बोलूं गुलशन, अभी तो सिखाया मैंने। एटीसी ऑफ द एयर मतलब फर्स्ट तुम्हारा एटीसी का रिप्लाई नहीं है, ट्राई टू रेज द स्टेशन टू अदर एटीसी, कपल उनका भी नहीं है, तो अज्यूम टोटल आरसीएफ। अफर्म सर। इतना तो डॉट्स कनेक्ट करो ना गुलशन, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सब कुछ स्पेसिफिक आपको आंसर चाहिए सर, आप बता दो मेरे को रिस्क नहीं लेना। आई लाइक दैट, बट आई यू हैव टू टेक द रिस्क। कोई नहीं, अच्छा जा रहे हो आप। आई एम जस्ट पुशिंग यू। बाकी स्टॉल सर इतना मैंने बताया ना, दुनिया की कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ लो, अपने आप समझ जाओगे आप। यू कैन थैंक मी लेटर। इतना फास्ट जेट इंजन कौन सिखाता है पता है? जिन्होंने 30-40 साल जेट इंजन पे काम किया है, बिकॉज उनसे ही सीखा हुआ है। माई फर्स्ट जेट इंजन आई नो एन इंजीनियर यूज टू टीच एट अ कॉलेज। मैं बोला यार आई वॉन्ट टू गिव अ लेक्चर ऑन टेक्निकल डेमो एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। डू यू हैव एनीथिंग टू शेयर? एंड आई हैव गुड rapport with seniors, okay, who are retired. So उन्हीं से मेन नॉलेज, बेस्ट नॉलेज तो उन्हीं से मिलती है। तो आई सेड सर कब आऊँ? उन्होंने बोला मेरी कॉलेज खत्म होगी फिर आ जाना। आई वेंट, ही रिमूव्ड अ पीस ऑफ पेपर। मैं डेस्क पे बैठा, वो लैब जेट इंजन लैब संभालते थे, एंड ही जस्ट स्टार्टेड। जैसे मैं पढ़ा था वैसे ही स्टार्टेड। वो पेपर आज भी है मेरे पास, वो नहीं भूलूंगा कभी मैं। एंड कहीं होगा तो yeah, it's nice to gain knowledge in aviation, student. It's amazing. These machines are beautiful. I mean, heights of invention, मैं बोलूंगा आपको। It's like a live organism, you know, jet engines. So yeah, take this, take the calls, remember everything. If you have already messaged and all, make sure everything is going well. And remember, it doesn't hurt to know that something that we all have but we don't know is willpower. If you will to do something, वो हो जाता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप बोलो आई विल टू डू इट, फील करो, बस वो हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये है ना, हमारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी होती है कि हमारी विल ही चली जाती है। विल ही नहीं है, डिजायर ही नहीं है, ड्राइव ही नहीं है। वी आर सो स्ट्रेस्ड एंड सप्रेस्ड विद आवर प्रॉब्लम्स, विल को जगह ही नहीं मिलता है। इसलिए हम सुबह उठ के ये बोल सकते हैं आई विल, बस। आई विल टू बी हैप्पी, आई विल टू डू इट, आई विल टू सक्सीड, आई विल टू फाइट। है मेरे पास। कुछ लोग बोलते हैं डेस्टिनी, डेस्टिनी है तो अच्छा होगा, बुरा है तो बुरा होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत बड़ी चीज शेयर कर रहा हूँ जो बड़े बड़े साधु लोग के पास भी नहीं होती है, जो 25-30 साल मेडिटेट करके भी नहीं ले पाते हैं। आई एम नॉट अलाउड टू शेयर दीज थिंग्स, बट स्टूडेंट्स को एग्जाम में काम आ सकता है। आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। डेस्टिनी कैन बी changed through one and only one thing, that is will. Ponder on this also when you're having lunch. Food for the body, food for the mind,
mind, and this is food for success to change your lives. All right, signing off, students. Tomorrow I'll meet you at 10 a.m. and I'm planning 10 a.m. आपको टाइम दे रहा हूँ मैं. Please जल्दी आ जाऊंगा. Surprises नहीं चाहिए मुझे. आधे लोग 10:30 आ रहे हैं because if I'm so tomorrow I'm planning to do those a few procedures. So अच्छा रहेगा आप लोग टाइम पे अटेंड कर लो. ठीक है? I'll take a leave, students. Gulshan call भेजना मुझे. Keep your discussions on. Technical discussions, RT discussions, keep them coming over WhatsApp, chat, text. We can schedule 5-10 minute calls also towards the end of the day, late at night when you're studying. Hannah, let's do it, everyone. Okay, I'll take your leave. Hi, Anna, kuch? Permission de do, Gurpreet? Thank you so much, sir. Chalo, bye. Take care, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.